Dr. S.D. Sir, Coordinator of Biotechnology Department, Dr. K.R. Rao sir, and our today's respected guest speakers, Dr. Rahul Sherke sir, Director at RRS Fertilizing Private Limited, Bolgaon, KH, Bharti, Solapur, Maharashtra, and Mr. Karan Maswa, Patent Agent, Patil APR Associate, Faridabad, Haryana. All department head and in charge, faculty members, and dear students, once again, I welcome you all for today's online impact lecture session 2, organized by Department of Biotechnology, Walton College of Arts and Science in collaboration with Institutions Innovation Council, that is IIC, and sponsored by MOE's Innovation Cell, MIC, All India Council for Technical Education, New Delhi, India. Now I request Dr. N.B. Patkar sir for the presidential speech, that is principal of IIC of our college, to introduce today's event. Dr. N.B. Patkar sir. Thank you, madam. Good afternoon, everybody. Myself, Dr. N.B. Patkar, President, Institutions Innovation Council of Walton College of Arts and Science, Solapur, Maharashtra, India. Firstly, welcome you all for this Impact Lecture Series, Session 2, jointly organized by Department of Biotechnology, Walton College of Arts and Science, Autonomous Solapur, and Institutions Innovation Council, sponsored by Ministry of Education's Innovation Cell, AICTE New Delhi. I also take this opportunity to introduce Institutions Innovation Council. It is a network to promote innovation in the institution through multitudinous nodes leading to an innovation promotion ecosystem in the campuses. The major focus of IIC is to create a vibrant local innovation system, startup supporting mechanism in higher education institutes, to prepare institute for a utter ranking of innovations achievement framework, establish functional ecosystem for scouting ideas and pre-incubation of ideas, and develop better cognitive ability for technology students. This Impact Lecture session includes two guest lectures by two distinguished fellows. First by Dr. Rahul Sherke sir, Director RRS Fertilizer Private Limited, Solapur, Maharashtra, on topic enhancing entrepreneurship and innovation in biology for sustainable development. And second by Mr. Sharan Basawa sir, patent expert, Patil IPR Associates, Faridabad, Haryana State, on topic the role of patent in supporting research and innovation. At the end of the session, the participants will gain the concept of innovation, incubation, entrepreneurship, and how to file a patent in Indian patent system, the allocation of innovative skills among the students to enhance their research skills as well as ignite their minds towards achieving their career objectives in the research and scientific endeavors, and to use this knowledge to patent their innovative things and ideas. This Impact Lecture Series sessions provide a strong platform for the students and the faculty members to interact with the renowned personalities and share their ideas and acquire the relevant knowledge in the respective subjects. It's my great privilege to convey my deep sense of gratitude towards Ministry of Education, Innovation Council and AICTE New Delhi for extending their support towards our institution for organizing various activities under the banner of Institutions Innovation Council. We wish to continue such activities in future with the same support of Ministries of Innovation Council and AICTE. I wish all the best for today's session and hope all the participants will enjoy the lectures. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I would like to request Vice Principal of Science Department, Dr. R.V. Hippargi sir, to kindly proceed with presidential remark. Dr. R.V. Hippargi sir. Thank you very much and congratulations to the Department of Biotechnology and the resource persons who have given their consent for today's seminars, which is organized under the banner of the MOE's Innovation Cell and AICT. The ultimate purpose of these lecture series is to promote the innovation, IPR, and
to create startup culture within the academic environ, that is the colleges or the institutions. That is a wonderful idea by the Government of India's MOE Innovation Cell. First of all, I welcome on behalf of the principal, management, staff, and students of the college two wonderful resource persons which I could see today in the invitation. We are having with us for the lecture one respected Dr. Rahul Sheke, who is having a very nice uh, title for his lecture, that is Enhancing Entrepreneurship and Innovation in Biology for Sustainable Development. We all know that much of the biology is done within the four wall of the classroom, and the knowledge which is gained in the laboratory, in the college, should actually percolate. It should go out of the college. It should help the society, industry, and it should help actually in building the science and technology culture of the country. I welcome you, sir, on behalf of the principal in the college. Second lecture which we are having is for that we are having Mr. Sharana Baswa, sir. I welcome you, sir, also here in this lecture series. And your title is Role of the Patent. It is a very important topic actually in supporting research, innovation. The gist of the lecture, both of the lectures, is to promote the innovation, to promote the discoveries, and then apply this knowledge which is gained overall by the student in the campus for the betterment of the society. So with these few words, once again, I welcome one and all the students and the resource persons, and congratulate the organizers, that is Patkar sir and all the colleagues from the Department of Biotechnology for organizing such a wonderful session for the students. I wish all the best for this lecture series. With these few words, I conclude. Thank you very much. Thank you very Thank you, sir. much, sir, for your constant support and encouraging words. Now, I request Dr. VP Sinurkar, sir, to introduce our today's guest speakers. Dr. VP Sinurkar, sir. Good afternoon, all of you. It's a great privilege for me to introduce today's resource persons for this Impact Lecture Series Session 2. First speaker or resource person, Dr. Rahul Shelke. The sir's qualification is MSc in Microbiology from Shivaji Mahavidyalaya, Barshi, and he completed his PhD in Microbiology from Waltham College of Arts and Science and Solapur University, Solapur. Working experience. Presently, sir is working as a director of RRS Fertilizant Private Limited, a company which is involved in the manufacturing and marketing of biofertilizers and biopesticides. Sir is also working as a consultant for various biofertilizer and biopesticide manufacturing industries, and is also working as assistant professor at UG and PG level in Shri Shivaji Mahavidyalaya, Barshi. And he is also having working experience as an assistant professor in Hemuji Chandale College, Shelgaon, for 2 years, and Renuka Nursing College, Barshi. Coming to the memberships, sir is a member of Microbiology Society of India, and he's also the member of BOS in Microbiology at Waltham College of Arts and Science. Coming to the achievements, actually, it's a very huge list. Just to brief out, sir has won 3 prizes in Avishkar Research Festival during the year 2014, 15, and 2017, and first prize in the National Conference in 2018. Second prize in Anveshan, which is West Zone Research Festival, that is in the year 2019. And he has participated and presented research projects at PhD level in 3 Maharashtra State Inter-University Research Conventions held in 3 different consecutive years. And to his credit, sir has published more than 8 research papers in various national and international journals. And he has deposited 16S rRNA sequences of 40 bacterial strains in the EMBL database. Coming to the seminars and workshops,
Sir has participated in over 8 seminars and workshops, and he has participated in 4 international and national conferences so far. So, with this brief introduction, I welcome him to this Impact Lecture series. And I also have the privilege of introducing our second speaker, resource person, Mr. Sharan Basava. Sir is a registered patent agent, and he has qualified patent agent examination in the year 2008 and registered as patent agent with the Patent Office of India. Since then, he is involved in with various institutes for filing their patent applications and patent proceedings in India and international applications at PCT through Patil IPR Associates. He belongs to Raichur district of Karnataka, and he has completed his masters in biochemistry from Gulbarga University, Kalaburgi. And he started his research career from National Center for Cell Sciences, Pune. And he moved to IIT Guwahati as a staff member and worked at Department of Biotechnology for 7 years as a teaching staff. Since last 12 years, he is residing in Delhi and having his offices in Pune and Delhi. He has completed courses on intellectual property rights from World Intellectual Property Organization and passed with distinction. His firm has filed more than 200 applications in India and international applications also. His firm is associated with various individual applicants as well as government and private institutes of India and outside India for securing intellectual property rights. So with this very brief introduction, I welcome him to this Impact Lecture series and session 2. And I thank the organizers for giving me an opportunity to introduce the resource persons of today's session. Thank you one and all. Thank you so much, Dr. VP Sinurkar, sir, for introducing our today's respected guest. Thank you so much, sir. With this introduction, I will conclude that the inaugural session is over, and I am here for vote of thanks of inaugural session. So I would like to thank Dr. N.B. Patkar, sir, President of IIC, to introduce our program schedule to all the participants, students, and faculties. And I also thank Mr. R.V. Hippargi, sir, for the presidential speech, and I also thank to Mr. VP Sinurkar sir for introduction of guest. Thank you so much, all of you. And I declare the inaugural program is successfully completed, and let us start with our first session. So I would like to request our first guest speaker, Dr. Rahul Sherke sir, to kindly proceed. Thank you so much, all. Okay. Yes, Dr. Rahul Sherke sir, you can proceed. Okay. Thank you, sir. Thank you so much for that. That's a brief introduction of ours. Today we discuss on our topic, that's the enhancing entrepreneurship and innovation in biology for sustainable development. In this session, we also introduce about the overall introduction about the biofertilizer, or also overall introduction about the biopesticides. What is the manufacturing process? What is the biofertilizer, or which biofertilizers are recently available in market, or which type of biopesticides recently available in markets, or why we not work properly in this agricultural field, because that's a many type of product are available, but the that's results not shown to the farmers, because of the environmental changes, microorganisms does not susceptible in that agricultural field. Okay, so firstly I share my PPT here.
Firstly, we discuss about the origin of problem or the background. We know that recently the different type of chemical fertilizers or pesticides are used in the agricultural field with the attitude if that chemical fertilizer are little bit good, but a lot more will be a better and have played a havoc with the human and other life forms for the optimum production of agricultural produce and to feed the growing the populations. Application of chemical fertilizers and pesticides have become a necessary. Such type of agricultural practices allow the growth and sustainability for food grains, but at the same time have impacted badly on the environment and human health. So we badly need some organic alternatives. Would we will grade the interest? We provide much improved or much effective organic alternatives. So that's alternative source is microorganisms, or we use the biofertilizers. So we solve the problem on the basis of microbes in a groups. We prepare the consortia, can do wonder, and that's consortia is useful for the agricultural field, or that consortia are beneficial to develop the agricultural field. Uh, अभी जो थोड़ा सा मैं हिंदी में भी बात करता हूँ क्योंकि जो जो कंसेप्ट है हम ठीक तरह से समझा सकते हैं आपको। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो मार्केट में बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं हम, तो बायो फर्टिलाइजर्स कौन से हैं? जैसे कि अजोटोबैक्टर है, राइजोबियम, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग, पोटैश मोबिलाइजिंग। सो दैट डिफरेंट बायो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन मार्केट, बट उनका इम्पैक्ट क्या रहता है कि वो कॉस्टली पड़ते हैं फार्मर्स को। अगर वो फार्मर्स एप्लीकेशन करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, जैसे कि अगर हम अजोटोबैक्टर, एक वन ऑफ एग्जांपल, अजोटोबैक्टर अगर हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उसकी कॉस्ट मिनिमम आती है 400 रुपीज, और दैट्स हाईली कॉस्टली। सो उसका एप्लीकेशन ठीक तरह से नहीं हो, पैरामीटर्स अगर चेंज है, सॉइल में हायर पीएच है कि हायर टेम्परेचर अगर वहां पर अवेलेबल है, तो ऑर्गेनिज्म सस्टेनेबल नहीं रहते वहां पर, और अगर ऑर्गेनिज्म वहां पर सस्टेन नहीं रहते तो वहां पर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते और हमें प्रॉपरली वहां पर ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं दिखती। सो फार्मर्स अवॉइड करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स को। ओके, some of the introduction about the biofertilizer. जैसे कि the biofertilizers are living microbes that enhance the plant nutrition by the either by mobilizing or increasing the nutrient availability in soil. Various microbial taxa, including beneficial bacteria, fungi, currently use the biofertilizer as the successful colonize the rhizosphere or the rhizoplant or a root inhaler, or also the for the root growth, that's the bacteria are used. Recently, the biofertilizer available in markets. So these are the list of biofertilizer. That's the acetobacter, zinc solubilizing biofertilizer, potash mobilizing biofertilizer, phosphate solubilizing biofertilizer, azospiralium, mycorrhizal biofertilizer, rhizobium, liquid consortia और carrier based consortia. आपने तो इन सभी नाम सुने होंगे मार्केट में कि ये सब बायो फर्टिलाइजर मिलते हैं, अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन दैट्स टू प्रोडक्ट्स आर यूनिक दैट्स शोन इन दैट्स लिस्ट, दैट्स द लिक्विड कॉन्सर्शिया और कैरियर बेस्ड कॉन्सर्शिया। व्हाट इज मीन बाय द लिक्विड कॉन्सर्शिया? हम डिस्कस तो करेंगे कि कौन सा कौन सा बैक्टीरिया है जो कौन सा काम करता है और उसका वर्किंग क्या होता है। अगर वो हम एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस करते हैं तो रोल क्या प्ले करता है और उसका बेनिफिट क्या रहता है एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए। लेकिन उससे पहले आपने तो ये नाम सुने होंगे कि जैसे कि जिंक सोलिबलाइजिंग, पोटैश मोबिलाइजिंग, एजोस्पाइरलियम, माइकोराइजल, एसिटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर, बट दैट्स two products are listed in government approved list. So that's the liquid consortia or carrier based consortia. A liquid consortia means three type of bacteria present in one product. So which three type of bacteria? First one is a nitrogen fixing
potash mobilizing and phosphate solubilizing. अगर कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट अगर उसकी ग्रोथ प्रॉपर होनी चाहिए, तो एट दैट टाइम अगर ग्रोथ प्रॉपर होनी चाहिए तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट कंटेंट रहते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, सो दैट्स कंटेंट आर फर्स्ट, वी नो दैट्स द कंटेंट, दैट्स द macronutrients or micronutrients. Which macronutrients are useful for the plant growth? So these are the nitrogen, phosphorus, and potash. And the micronutrients also useful for the plants, for the growth. Okay. अगर ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रॉपरली नहीं मिलते तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो सकती. हमें वो अवेलेबल करके देना चाहिए. अभी अगर हम रिसर्च वर्क करना चाहते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो हम क्या रिसर्च वर्क कर सकते हैं? आप जो अभी बोलते हैं कि अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, कंपनी जो उसे बनाती है, हम उससे उसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चरल फील्ड में करते हैं, लेकिन उतना ग्रोथ रेट क्यों नहीं है, क्यों उतना प्रोडक्शन क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाती है सॉइल की सलाइनिटी. अगर सॉइल की सलाइनिटी इंक्रीज होती है तो ऑर्गेनिजम्स वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते. जैसे कि बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, अगर हम पहले की बात करें तो पहले फार्मर्स फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करते थे एग्रीकल्चरल फील्ड में. वाई? क्योंकि उस टाइम माइक्रोबियल कॉन्सर्शिया ऑर्गेनिजम्स सॉइल में ज्यादातर अवेलेबल था. लेकिन अभी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन हम करते हैं सॉइल में, तो उसकी वजह से सॉइल की सलाइनिटी इंक्रीज हो रही है और ऑर्गेनिजम्स अभी वहां पर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं और ऑर्गेनिज्म उसका काम प्रॉपरली नहीं कर रहे. तो हमें क्या कर रहे हैं, हमें अभी क्या करना पड़ रहा है कि हमें ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करने पड़ रहे हैं और उसका एप्लीकेशन करना पड़ रहा है सॉइल में. ओके. तो बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में जो बायो फर्टिलाइजर बनाती है और उसका और वो मार्केट में बेचती है. लेकिन चैलेंज क्या है अभी? अगर फार्मर एक फर्टिलाइजर मार्केट से लेता है, उसका एप्लीकेशन करता है, अगर सॉइल का पीएच ठीक तरह से नहीं है, सॉइल की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ठीक तरह से नहीं है, सलाइनिटी इंक्रीज है, तो ऑर्गेनिजम्स वहां पर सर्वाइव नहीं हो सकते और उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते. तो ज्यादातर फार्मर्स पसंद करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स में और वो बायो फर्टिलाइजर्स की तरफ नहीं जाते. अभी बोला ना कि बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारी रिसर्च अभी हुई है. और रिसर्च कहाँ पर हुई है? मेडिकल फील्ड में है, फूड इंडस्ट्रीज में है. लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक एग्रीकल्चरल फील्ड में इतनी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है हमारी इंडिया में. और हमारा चैलेंज क्या है कि हम वो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम वो जो रिसर्च लेवल है वो कैसे बढ़ा सकते हैं अभी एग्रीकल्चरल फील्ड में. सो जैसे क्या मैंने पार्टिसिपेट किया था अनवेंशन में वेस्ट जोन नेशनल लेवल रिसर्च कंपटीशन. तो एग्री बेस्ड जो रिसर्च मैंने किया था, तो उसमें मैंने मुझे जो ऑर्गेनिजम्स मिले सॉइल में से, मैंने कुछ ऑर्गेनिजम्स आइसोलेट्स किए. जो आइसोलेट किए हुए ऑर्गेनिजम्स है, तो वो ऑर्गेनिजम्स अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी रिलीज करते हैं. अभी जो मार्केट्स में मिलता है, जैसे कि अजोटोबैक्टर ओनली फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बट इट डज नॉट सोल्यूबलाइज द फॉस्फेट, इट डज नॉट सोल्यूबलाइज द पोटैश. ओके. सो हम वो सिर्फ नाइट्रोजन सोर्स के लिए दे सकते हैं फार्मर्स को. लेकिन ऐसे सम ऑफ द ऐसे ऑर्गेनिजम्स है हम सॉइल में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, उसे हम आइसोलेट कर सकते हैं और उसका स्टडी उसके बारे में और हम इन डिटेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म अदर कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं. जैसे कि bacillus species, it has a capacity to solubilize the phosphate, it has a capacity to mobilize the potash, it is also zinc solubilized, it has a capacity to produce indole acetic acid, it has also capacity to produce the gibberellin. So these are the growth promoting agents.
सो इट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। और एक ड्रॉबैक जो एग्रीकल्चरल फील्ड में अभी यूज करते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की बायो फर्टिलाइजर्स रिलेटेड, अगर हम बायो पेस्टिसाइड्स रिलेटेड रिलेटेड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखें तो बायो पेस्टिसाइड्स में ऐसे फंगस है, ऐसे बैक्टीरिया है जो यूजफुल है और बेनिफिशियल है टू कंट्रोल द control the pest, different type of pest. Some example like that, Trichoderma viride, it is used as a fungicide. Verticillium lecani, it is used to insecticide in a agricultural field. So these are the fungicides, insecticides these are the biopesticides available in market. But अब इसके रिजल्ट क्यों नहीं, अगर इससे कंट्रोल हो सकता है, अगर फंगिसाइड्स, अगर क्रॉप पर फंगस आ जाता है, अगर हम उसके लिए सोर्स फंगिसाइड्स यूज करते हैं, दैट इज द ट्राइकोडर्मा वायरिडी, तो एक ऑर्गेनिक सोर्स अवेलेबल है और ए फंगस अवेलेबल है टू कंट्रोल द फंगस, अदर फंगस। तो केमिकल फंगिसाइड्स क्यों यूज करते हैं फार्मर्स, और इसके रिजल्ट्स क्यों नहीं प्रॉपरली मिलते? जैसे कि अगर क्रॉप पे इंसेक्ट्स का अटैक हो चुका है और हम उसके लिए जो बायोपेस्टिसाइड्स यूज करते हैं वो वर्टिसिलियम लेकानी है, एक कंट्रोल करता है इंसेक्ट्स को जो अगर क्रॉप पर आ जाए, और दैट द फंगस, वर्टिसिलियम लेकानी, दैट द फंगस। और वी ऑल्सो यूज फंगिसाइड्स, दैट द ट्राइकोडर्मा वायरिडी। सो दैट्स द फंगिसाइड्स। अगर हम ये दोनों का एप्लीकेशन करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो फंगिसाइड जो है ट्राइकोडर्मा वायरिडी वो ऑटोमेटिकली किल कर, इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वर्टिसिलियम लेकानी। सो अगर वर्टिसिलियम लेकानी फंगस है तो ट्राइकोडर्मा वायरिडी उसे किल इनहिबिट कर देगा ग्रोथ, तो वर्टिसिलियम लेकानी उसके रिजल्ट्स नहीं दिखा पाएगा क्रॉप पे और इंसेक्ट्स कंट्रोल नहीं हो सकते। तो ये ड्रॉबैक्स है, और फार्मर्स क्या सोचते हैं कि अगर मैंने इसका एप्लीकेशन किया है तो ये टोटली कंट्रोल होना चाहिए जो भी पेस्ट उनके क्रॉप पे आया है, और वो नहीं होता। वाई, क्यों नहीं होता? क्योंकि जो एप्लीकेशन करने की प्रोसीजर होती है वो गलत हो जाती है। ट्राइकोडर्मा वायरिडी, इट्स अ फंगिसाइड, it inhibit the growth of verticillium lecani. So the verticillium lecani does not show the results to control the pest. Okay, so that's drawback. So our challenge was that ऐसे फंगस आइसोलेट्स करो, जैसे कि अगर हमें ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाइड करना होता है तो हम 16 years RNA सीक्वेंसिंग करते हैं। अगर फंगस आइडेंटिफाइड करना होता है तो हम 18 years RNA सीक्वेंसिंग हमें करना पड़ता है। अगर उनके हम एक्सेशन नंबर लेते हैं, जैसे कि 10, 30 एक्सेशन नंबर स्पेसीज, और 10, so that's 2 accession से चेक करें कि which species does not inhibit the growth of, so that type of culture we combinedly use and apply in a agricultural field. Okay, so that's the overall introduction or introduction about the biofertilizer और biopesticides. अभी हम जो बायोफर्टिलाइजर्स मार्केट्स में मिलते हैं और उनका एप्लीकेशन क्या है और उनका यूज क्या है एग्रीकल्चरल फील्ड में, वो हम लिस्ट की तरह लिस्ट जो भी लिस्ट दी है उसी के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो लिस्ट ऑफ बायोफर्टिलाइजर। गवर्नमेंट अभी जो परमिशन देता है वो इन 10 बायोफर्टिलाइजर्स को परमिशन देता है कि आप ये 10 बायोफर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और मार्केट में इसे बेच सकते हो, जिसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट रहता है। एक्ट के हिसाब से हमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है उसका सेल काउंट कितना होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, उसकी लाइफ स्पैन कितनी होनी चाहिए, ये सभी एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रहता है। उसी के हिसाब से हमें हर एक बायोफर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। ओके, सो दैट्स 10 बायोफर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट जिसे परमिशन देती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जैसे कि एसिटोबैक्टर, जिंक सोल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर, पोटेश मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर,
phosphate solubilizing biofertilizer, azospirillum, mycorrhizal biofertilizer, azotobacter, rhizobium, liquid consortia, and carrier-based consortia. In liquid consortia, we use the nitrogen fixing, potash mobilizing, and phosphate solubilizing bacteria in liquid form. And in carrier based, in powder form, we also prepare that consortia, NPK consortia, nitrogen fixing, potash mobilizing, and phosphate solubilizing bacteria. Okay. So firstly, we discuss about the Acetobacter. That Acetobacter is a nitrogen fixing bacteria. It is symbiotically associated with the sugarcane. Acetobacter converts atmospheric nitrogen into ammonia or nitrate, which required to the biosynthesis or basic building blocks of plants. It is a symbiotic bacteria capable of fixing atmospheric nitrogen by living within the sugar plants. They are found in all parts of plant body. Acetobacter, that's the nitrogen fixing. For specific media are used for the isolation of Acetobacter, that's the nitrogen free agar media, Johnson's media. We also use Johnson's media for the isolation of Acetobacter. As Acetobacter, that's bacteria only used for the sugarcane. It is fixed the atmospheric. जैसे कि पता है कि नाइट्रोजन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट useful for the growth of plant, and that's bacteria, that's the nitrogen fixing bacteria, Acetobacter. It fixes the atmospheric nitrogen, and but it is only a beneficial for a sugarcane. अदर प्लांट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन ये सिम्बायोटिकली एसोसिएट रहता है शुगरकेन के लिए. हमें पता है कि मार्केट में ये बायोफर्टिलाइजर मिलता है, लेकिन इसका स्पेसिफिक यूज किसके लिए है और कुछ कौन से क्रॉप के लिए हम ये यूज कर सकते हैं. तो हम ये सिर्फ एसिटोबैक्टर शुगरकेन के लिए यूज कर सकते हो, और जो अदर प्लांट्स है उसमें भी ये बेनिफिशियल है. नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एटमॉस्फेयर में, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. और हमें जैसे कि पता है कि नाइट्रोजन इट इज ओनली अ ग्रोथ फॉर द प्लांट्स. ओके, सो अनदर वन दैट्स द अजोटोबैक्टर. we know that Azotobacter is a non-symbiotic nitrogen fixing bacteria. It is a freely living in a soil and it fixes the atmospheric nitrogen. अगर हम देखें कि अभी अजोटोबैक्टर मालूम है कि हमें मार्केट में मिलता है, तो वो कौन से क्रॉप के लिए हमें बेनिफिशियल है और हम वो कौन से क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं अजोटोबैक्टर. So for the isolation of Azotobacter, we use the specific media, that's the Ashbash media. Okay, and it is recently highly used. अभी जो ये ज्यादातर यूज करते हैं वो सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं. हमें मालूम है कि अगर हमें पहले अगर धान हमें खेत में अभी धान डालने हैं, तो पहले हमें उसे ट्रीटमेंट देनी पड़ती है. हमने देखा है कि फार्मर्स कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लगाते हैं सीड्स को और बाद में वो अप्लाई करते हैं सॉइल में. ओके, सो जो भी एकदल प्लांट जो रहते हैं कॉटिलिडॉन्स हम जिसे बोलते हैं, जैसे कि जवार, बाजरी, सो दैट्स क्रॉप. For that crop, we use the Azotobacter for seed treatment. हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं अजोटोबैक्टर का उन क्रॉप्स के लिए, जैसे कि जवार, बाजरी है, उसके लिए हम सीड प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं. व्हाई वी यूज दिस फॉर सीड प्रोसेसिंग? बिकॉज अजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और हमें पता है कि सीड की जर्मिनेशन होने के लिए उसे नाइट्रोजन अवेलेबल होना चाहिए. जो भी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उसका फिक्सेशन करने के लिए, और जो हम बोलते हैं कि 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, सो उसका प्रॉपर फिक्सेशन होने के लिए ज्यादातर अजोटोबैक्टर यूज किया जाता है फॉर अ सीड ट्रीटमेंट, ओनली फॉर अ सीड ट्रीटमेंट. ओके,
So that's the here we show the some short video information about the azotobacter. ओके, आपको पता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन ये जो शॉर्ट वीडियो है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रॉपरली कैसे होता है, जैसे कि डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, एंड and that's ammonia are available as a nitrogen source for a plant for a growth. Okay. Next one is a rhizobium. ये भी आपको पता है राइजोबियम। इसके लिए जो हम स्पेसिफिक मीडिया यूज करते हैं, प्रॉपर मीडिया फॉर द आइसोलेशन ऑफ राइजोबियम, दैट्स द कांगोरेड ईस्ट एक्सट्रैक्ट मैनिटल साल्ट अगार। और ये जो है ये भी हाईली यूज करते हैं फॉर सीड ट्रीटमेंट फॉर अ डाइकोटिलेडोन प्लांट्स, जैसे कि हम जिसे द्विदल धान्य ऐसे बोलते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर यूज किए जाते हैं, दैट्स राइजोबियम फॉर अ सीड ट्रीटमेंट। एंड अभी जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट अभी फार्मर्स को सजेस्ट कर रहे हैं कि, और फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप राइजोबियम ही यूज करें फॉर द सीड ट्रीटमेंट। अभी हमारा जो एरिया है सोलापुर, वहां पर मैक्सिमम सोयाबीन का प्लांटेशन अभी ज्यादातर हो रहा है। तो सोयाबीन के लिए जो राइजोबियम जापोनिकम जो स्पेसीज है राइजोबियम की, वो हाईली यूज होती है बिकॉज इट हैज अ हाईएस्ट कैपेसिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो प्लांट का ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है, सीड जर्मिनेशन प्रॉपरली हो रहा है, और क्रॉप प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है। इसलिए खुद गवर्नमेंट अभी प्रमोट कर रहा है बायो फर्टिलाइजर्स को, जैसे कि राइजोबियम को अभी बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और वो फ्रीली अवेलेबल कर रहे हैं फार्मर्स को कि आप इसका एप्लीकेशन करो फॉर सीड ट्रीटमेंट के लिए, आप ये ज्यादा से ज्यादा यूज करो। ओके, सो दैट्स राइजोबियम। सो नेक्स्ट वन इज अ पोटैश मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। जैसे कि पोटैश भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट की ग्रोथ के लिए वो बेनिफिशियल रहता है। अब इनका रोल क्या होता है, अभी हम देखते हैं कि ज्यादातर हमारे यहाँ देखते हैं कि हम फार्मर्स बैकग्राउंड से आ ही जाते हैं। हमको पता है कि अभी हम अगर खेत में एप्लीकेशन करने वाले हैं सीड्स का, तो उस टाइम हम फर्टिलाइजर्स लेते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो उस केमिकल फर्टिलाइजर्स के बैक पर मेंशन रहता है कि एनपीके। एनपीके मीन्स जस्ट लाइक 19 19 जैसे कि 1261। सो दैट्स content mentioned on this fertilizer bag. That contains means 19 means the NPK, nitrogen, phosphorus and potash. So उसका परसेंटेज उस फर्टिलाइजर में कितना है वो मेंशन करते हैं उस बैग पर। अगर हम जैसे कि अनदर वन है 0054। 00 means nitrogen 0%, 0% phosphorus, and 54 means potash. 54% potash were present in this fertilizer. अगर एक फार्मर उसका एप्लीकेशन करता है एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो
उसमें ऐसे डिटेक्ट होता है कि अगर मैंने 0054 ए फर्टिलाइजर अप्लाई किया तो मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत प्रॉपर आई है और क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। तो हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इन 19 ये फर्टिलाइजर डालो तभी भी अच्छी ग्रोथ आएगी, या 0054 डालने के बाद ही अच्छी ग्रोथ आएगी। सो दैट डिपेंड ऑन सॉइल फर्टिलिटी। देखिए, अगर सॉइल में पोटैश का परसेंटेज ज्यादा है, जैसे कि और हम वही फर्टिलाइजर अगर अगेन हम अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, हमने नहीं देखा कि सॉइल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, पोटैश का कितना है और फॉस्फोरस का कितना परसेंटेज है, हमने ये नहीं चेक किया। और हमने क्या किया कि जो भी है फर्टिलाइजर, जैसे कि 1261, अगर हमने वो अप्लाई कर दिया, 61 मीन्स फॉस्फेट परसेंटेज 61, ऑलरेडी हमारे सॉइल में फॉस्फेट का परसेंटेज ज्यादा है और हम फिर भी फॉस्फेट का परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं और ज्यादा डाल रहे हैं फार्म में, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा? तो सॉइल की सलाइनिटी इंक्रीज होगी, और सॉइल में अगर सॉइल की सलाइनिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्रॉप प्रोडक्शन उतनी अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। तो पहले कभी भी अगर कोई फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो पहले सॉइल में हमें पहले एनालिसिस करना चाहिए कि एनपीके परसेंटेज कितना है उसमें। अगर हो हम एनपीके परसेंटेज डिटेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, काउंट करते हैं, तो उसी के हिसाब से हम जो बेनिफिशियल फर्टिलाइजर है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को अल्टरनेटली अगर ये बायो फर्टिलाइजर्स अप्लाई करेंगे तभी भी वो बेनिफिशियल ही रहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि पोटैश मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, व्हाट इज द रोल ऑफ पोटैश इन क्रॉप? सो इंक्रीज द फ्रूट साइज और शाइनिंग ऑन द फ्रूट्स। पोटैश का जो मेजर रोल होता है, जैसे कि हमें मालूम है कि प्लांट की ग्रोथ होने के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए। अगर एक वन ऑफ द प्लांट इन फ्लावरिंग स्टेज, अगर फ्लावर आएंगे तभी उसका फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फ्लावरिंग स्टेज है तो उस टाइम हमें फॉस्फोरस सोर्स की ज्यादा जरूरत रहती है प्लांट को उस टाइम फॉस्फोरस सोर्स की ज्यादा जरूरत रहती है। अगर हमारा क्रॉप फ्रूटिंग स्टेज में है, जब वहां पर फल धारणा हो रही है क्रॉप में, तो एट दैट टाइम पोटैश इज अ बेनिफिशियल। सो दैट्स बैक्टीरिया, पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया ए यूजफुल कब है? तो ए फ्रूटिंग स्टेज में, जब फ्रूट की साइज इंक्रीज होनी चाहिए, उस पर शाइनिंग आनी चाहिए, तभी वो हेल्दी फ्रूट रहेगा। सो एट दैट टाइम पोटैश इज अ बेनिफिशियल सोर्स। So these bacteria, potash mobilizing bacteria or potash solubilizing bacteria, there are two different type of bacteria present in agriculture. So potash solubilizing bacteria, insoluble form of potash, it converted into the soluble form. And potash mobilizing, अगर वहां पर बैक्टीरिया को पोटैश अवेलेबल नहीं हो रहा है तो वो अवेलेबल कर देगा पोटैश। अगर उसने वो पोटैश अवेलेबल कर दिया तो वो डायरेक्टली बेनिफिशियल रहेगा क्रॉप को, और जो भी प्लांट्स है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उसके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। तभी प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हमें दिख सकती है। ओके, नेक्स्ट वन बैक्टीरिया, दैट द फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये भी पता है आपको कि मैक्सिमम बैसिलस स्पीसीज आर सोल्युबलाइज द फॉस्फेट, इनसोल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू द सोल्युबल फॉर्म। The bacteria capable of solubilizing inorganic phosphorus from the insoluble compounds. Phosphate solubilization ability of rhizosphere microorganism is considered to be one of the most important traits associated with plants, that is the phosphate nutrition. Okay. जो बैक्टीरिया है फॉस्फेट सोल्यूबलाइज करता है, तो सो दैट बैक्टीरिया इज अ हाईली यूज्ड, दैट द Bacillus megaterium. It is highly used in agricultural field. That's the phosphate solubilizing bacteria. Or the specific media used for the isolation of that phosphate solubilizing bacteria. The media are used, that's the picoaxis media. Okay. जैसे कि आप बताया था कि potash is a macronutrient, also phosphate is a macronutrient. It is a
highly used for the plant growth in a flowering stage. Okay, so we isolate that bacteria. अभी जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट के, अगर हम फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आइसोलेट करते हैं, वी यूज पिकोवैक्सिस मीडिया प्रॉपरली, स्पेसिफिक मीडिया फॉर द आइसोलेशन ऑफ फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया. तो इनसोल्युबल फॉर्म जो फॉस्फेट है उस मीडिया में प्रेजेंट, तो ऑर्गेनिजम्स आफ्टर इंक्यूबेशन जोन ऑफ क्लियरेंस डिटेक्ट करते हैं पिकोवैक्सिस मीडिया पर. हमें जो जोन ऑफ क्लियरेंस, जैसे कि यहाँ पर हम पीपीटी में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉलोनी और उसके सराउंड में हमें जोन ऑफ क्लियरेंस डिटेक्ट हो रहा है. तो ये जोन ऑफ क्लियरेंस क्या है कि ऑर्गेनिजम्स इनसोल्यूबल जो फॉस्फेट है उसे सोल्यूबल कर देते हैं. ओके, तभी ये जोन ऑफ क्लियरेंस आ जाता है. तो उसका भी एक क्राइटेरिया है गवर्नमेंट से, एज पर एफसीओ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, दैट एक्ट says that minimum 4 millimeter zone of clearance were present in picovaccus media. कम से कम जो कॉलोनी वहां पर ग्रो हुई है तो मिनिमम 4 मिलीमीटर जोन ऑफ क्लियरेंस डिटेक्ट करें पिकोवैक्सिस मीडिया में, तभी हम उसका एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में और बायोफर्टिलाइजर, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर प्रोडक्शन में वो कर सकते हैं. अगर हम कोई फर्टाइल सॉइल ले या तो देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे सॉइल में जो 4 मिलीमीटर जोन ऑफ क्लियरेंस से भी ज्यादा जोन ऑफ क्लियरेंस डिटेक्ट करता है. जितना ज्यादा जोन ऑफ क्लियरेंस डिटेक्ट होगा ऑर्गेनिजम्स के पास, उतनी ही हाईएस्ट कैपेसिटी होगी कि वो फॉस्फेट सोल्यूबलाइज कर सकता है. अगर वैसे ऐसे स्पेसीज हम आइसोलेट करते हैं और उसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चरल फील्ड में करते हैं, तो दैट्स द बेनिफिशियल फॉर द एग्रीकल्चर. अभी जो हमें बैसिलस मेगाटेरियम मिलती है गवर्नमेंट से, हम जैसे कि उनके सजेशंस के अनुसार हमें अगर बैसिलस मेगाटेरियम यूज करनी है तो हमें वो जो स्पेसीज यूज करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो हमें एनसीसीएस से लेना पड़ता है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस. और वो स्पेसीज 4 मिलीमीटर ऑफ जोन ऑफ क्लियरेंस से दिखाती है पिकोवैक्सिस मीडिया में. तो जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड और ऑर्गेनिज्म रिलेटेड हम कोई रिसर्च करते हैं, इनोवेशन करते हैं, तो हमारा काम यही होना चाहिए कि हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स और ऐसे स्पेसीज हमें आइसोलेट्स करने चाहिए, डेवलप करने चाहिए कि जो सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करे, और जो अभी गवर्नमेंट सप्लाई कर रहे कल्चर उससे भी बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स हम आइसोलेट करें. और वो सिर्फ फॉस्फेट ही ना सोल्यूबलाइज करे तो वो अदर न्यूट्रिएंट भी रिलीज कर सकता है ऑर्गेनिज्म. और जैसे कि हम कह सकते हैं कि कहीं एग्रीकल्चर सॉइल हाईली पीएच लेवल है सॉइल में, तो ऑर्गेनिजम्स वहां पर अडैप्ट नहीं होते. तो दैट कंडीशन वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए. ओके, so that's the some introduction about the phosphate solubilizing bacteria. So again we discuss about the zinc solubilizing bacteria. That zinc solubilizing bacteria improves the availability of zinc. जैसे मालूम है हमने अभी तक डिस्कस किया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड. हमें पता है कि नाइट्रोजन, पोटेश एंड फॉस्फोरस, these are the macronutrients, but are micronutrients, and that zinc is also useful for the growth of plant. That bacteria, zinc solubilizing bacteria, improves the availability of zinc in soil and suitable for all crops. It insoluble compounds like zinc sulfate or zinc oxide and zinc carbonate are synthesized into the soluble form.
of zinc, and that's insoluble form of zinc are solubilize these bacteria and provide to the crops for increase their growth or increase the uh, crop production. ओके हमें ये तो मालूम है कि अभी हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में तो क्रॉप प्रोडक्शन जैसे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी से दिखाई देती है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा दिखता है, लेकिन सॉइल की हेल्थ खराब हो जा रही है. ओके बट अगर ज्यादातर हम देख रहे हैं कि फार्मर्स क्या करते हैं कि अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालें तो क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा. अगर ऐसे करते हैं तो क्या होता है, उसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है. प्लांट्स हमें मालूम है कि इट्स द लिविंग थिंग, उसे जितनी जरूरत है, जितने न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए फॉर ग्रोथ, उतने ही वो एब्सॉर्ब करेगा. अगर ज्यादा सोर्स मिलता है तो वो ज्यादा एब्सॉर्ब नहीं कर सकते क्रॉप. तो ऐसे में हम देख रहे हैं ना कि सॉइल की हेल्थ खराब हो रही है, और जो भी जैसे कि हार्मफुल पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो जो रूट्स एब्सॉर्ब करता है वो जो कंटेंट, तो वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाते हैं फ्रूट्स में, और हम फ्रूट्स एज अ हेल्दी फूड समझकर हम उसे यूज करते हैं, राइट. लेकिन वन ऑफ द एग्जाम्पल होता है, हमें पता है कि डीडीटी पाउडर अभी बैन हो चुका है टोटली, लेकिन अभी वो बैन क्यों हो चुका है, वो पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज किया जाता था मैक्सिमम एग्रीकल्चरल फील्ड में. अभी वो बैन क्यों किया गया है, दैट्स द कार्सिनोजेनिक, एंड 32 ईयर्स तक उसका एक मॉलिक्यूल डिग्रेड नहीं हो सकता. ओके 32 ईयर्स तक एक मॉलिक्यूल वो वही मॉलिक्यूल ग्रेन्स में और फ्रूट्स में दिखाई दे रहे थे, इसलिए उसे टोटली बैन कर दिया है. ओके लेकिन हमें पता है कि इतने साल तक एक केमिकल मॉलिक्यूल इजीली डिग्रेड नहीं हो सकता है, तो हम उस हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं. जैसे कि हमें पता है कि रूट्स जो न्यूट्रिएंट है वो एब्सॉर्ब करते हैं, और उसका जो अर्क होता है वो सारा स्टोर हो जाता है फ्रूट में, और फ्रूट अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स एब्सॉर्ब कर जाते हैं तो उसका अर्क फ्रूट्स में आ जाते, तो वो हम हेल्दी उसे फ्रूट कैसे कह सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि दैट इज द हार्मफुल और दैट इज द कार्सिनोजेनिक. ओके सो our challenge was that कि we prepare or we develop the alternative organic sources for the chemical fertilizer और chemical pesticides. कुछ स्टेट्स अभी हमें पता है कि टोटली बैन कर चुके हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर. तो उसके लिए अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल है क्या, अगर नहीं है तो वो डेवलप करना चाहिए. जैसे कि हमें मालूम है ना कि एक टेंडेंसी है फार्मर्स की, सभी की रहती है मैक्सिमम टाइम. अभी हमें पता है कि श्रीलंका में भी क्रॉप एग्रीकल्चरल पर बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ केमिकल फर्टिलाइजर्स बैन करने की वजह से. एक टेंडेंसी क्या है अभी फार्मर्स में कि अगर मैं सीड्स अप्लाई करता हूँ सॉइल में तो उसके साथ मुझे फर्टिलाइजर चाहिए ही चाहिए. अगर मुझे फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है उसके साथ छोड़ने के लिए तो क्रॉप अच्छा नहीं आएगा और क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होएगा. तो वो टोटल वो जो प्रोडक्शन है, वो जो एप्लीकेशन किए गए सीड्स है, तो टोटल वो लॉस हो जाएगा, उनका लॉस हो जाएगा वो टोटली. तो अगर वो टेंडेंसी हमें वही उनकी टेंडेंसी नहीं चेंज हो रही है तो उसके लिए अल्टरनेट सोर्स ऑर्गेनिक हमें देना चाहिए. तो कैसे हम उसे अल्टरनेट सोर्स दे सकते हैं. हमें मालूम है ना कि अभी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलते हैं तो वो एनपीके मिलता है मार्केट्स में. अगर हम वो एनपीके ही अवेलेबल कर दे, अभी देखा ना कि हमें गवर्नमेंट परमिशन देती है कि हम एनपीके कॉन्सर्शिया प्रिपेयर कर सकते हैं. एनपीके कॉन्सर्शिया मीन्स उसमें हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, पोटेश मोबिलाइजिंग एंड फॉस्फेट सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये तीनों बैक्टीरिया हम उसमें यूज कर सकते हैं. अगर हम ये तीनों बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं तो यही 3
इंपॉर्टेंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट सोर्सेस है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए सफिशिएंट है। अगर ये बैक्टीरिया हम हायर प्रोडक्ट और हायर नाइट्रोजन फिक्सिंग, हायर फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग, हायर पोटेश मोबिलाइजिंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे स्पेसीज आइडेंटिफाइड करते हैं और उनका एप्लीकेशन करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो डेफिनेटली फार्मर्स के लिए जब सीड्स का एप्लीकेशन करना है उसके लिए उनको एनपीके सोर्स मिल जाएगा। अभी जो ट्रेंड है मार्केट में अवेलेबल कि क्रॉप एप्लीकेशन, सीड एप्लीकेशन के टाइम कोई भी बायो फर्टिलाइजर नहीं यूज करता। कब यूज करते हैं लोग? यूज करते नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं फॉर कंट्रोल द पेस्ट, फॉर इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। लेकिन अभी जो यूज करते हैं वो, तो जैसे कि वो 1 लीटर की बोतल मार्केट से लाएंगे, फिर उसका जो परसेंटेज है उसमें जो सेल काउंट है उसी के हिसाब से उसका डायल्यूशन करेंगे और फिर वो एप्लीकेशन करेंगे। सिर्फ वो बाद में उनको जो ग्रोथ रेट है प्लांट का वो दिखाई देगा। अगर ग्रोथ अच्छे से नहीं आती है, अगर सॉइल की कंडीशन प्रॉपर नहीं है तो ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स वहां पर अडाप्ट नहीं हो सकते और ग्रोथ हमें वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन और प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं दिखाई देती। सो our challenge कि we develop or isolate the unique species from the soil. Okay. Another one bacteria is azoospermillum. It is also a nitrogen fixing bacteria. So that's bacteria is azoospermillum is also fix the nitrogen, or it has also capacity to produce the other compounds which is useful for the plant growth. Another one important bacteria was that, or a fungus, that's the fungus mycorrhiza. अभी मार्केट में बहुत ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड किसका चल रहा है? तो वो है माइकोराइजा का। अभी फार्मर्स इतना यूज कर रहे हैं माइकोराइजा का क्योंकि अभी इसके बेनिफिट्स लोगों को समझ आ रहे हैं। धीरे धीरे अभी जो ऑल बायो फर्टिलाइजर्स और ऑल बायोपेस्टिसाइड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोगों को मिल रही है और उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उसका अगर एप्लीकेशन प्रॉपर हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स केमिकल फर्टिलाइजर से भी बेस्ट मिलते हैं। तो ये जो माइकोराइजा है, आपको पता है कि माइकोराइजा उसका बेनिफिट क्या है? आपने सिर्फ सुना होगा कि ये एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। दैट द फंगस, टू टाइप ऑफ माइकोराइजल स्पेसीज वेयर प्रेजेंट, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। हमें पता है कि उसका एप्लीकेशन कैसा होता है क्योंकि उसका रोल कैसा होता है कि एंडो मीन्स द फंगल माइसिलियम इंसर्ट इनसाइड द रूट्स। Okay, so that's mycorrhiza are known as the endomycorrhiza and ectomycorrhiza. That's fungus grow on a root surface, uh, on the surface of roots. जो कि रूट से उनके सरफेस पे जो ग्रो होते हैं माइसिलियम, उसे हम एक्टोमाइकोराइजा बोलते हैं। और जो एंडोमाइकोराइजा है ये भी फंगस रूट्स पे ही ग्रो हो जाता है, लेकिन उसके जो माइसिलियम है वो डीप हो जाते हैं रूट्स में। रूट्स का मेन फंक्शन क्या रहता है? हमें पता है ना कि रूट्स का प्रॉपर एप्लीकेशन क्या है कि एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल। जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है सॉइल में, तो उसे एब्सॉर्ब करने का काम जो होता है तो वो करते हैं रूट्स। ओके, लेकिन दैट्स एंडोमाइकोराइजा, इट इज ऑल्सो नोन एज अ वैम, वेसिकुलर अर्बिकुलर माइकोराइजा। तो ये जो माइकोराइजा रहता है और ये जो फंगस रहता है तो उसके माइसिलियम रूट्स के अंदर डीप हो जाता है, टोटली इंसर्ट हो जाता है। माइसिलियम भी एक रोल प्ले करते हैं सॉइल में। वो भी न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं जो भी सॉइल में प्रेजेंट है, जैसे कि मिनरल्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो। माइसिलियम ने एब्सॉर्ब किया हुआ न्यूट्रिएंट्स टोटली मिल जाता है प्लांट के रूट्स को। तो रूट्स की न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो डबल हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ माइकोराइजा। एंड अनदर वन यूजफुल बेनिफिट वाज दैट कि हमें पता है कि अगर रूट्स डैमेज हो जाते हैं प्लांट्स के तो ग्रोथ प्लांट्स की प्रॉपरली नहीं हो जाएगी, प्रॉपरली उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती अगर उसके रूट्स डैमेज हो जाते हैं तो, किसी भी क्रॉप के और किसी भी प्लांट के।
बराबर। लेकिन ये जो माइकोरेजा स्प्रेड होता है, माइसिलियम स्प्रेड होता है रूट्स पर, तो उस माइसिलियम की वजह से जो भी इंसेक्ट्स रहते हैं सॉइल में, जो रूट्स को एज अ फूड यूज करते हैं, तो वो इंसेक्ट्स प्लांट को डैमेज नहीं करते बिकॉज ऑफ माइकोराइजा। ओके, सो रूट्स हेल्दी रहेंगे तो क्रॉप अच्छी तरह से आ जाएगा। सो दैट्स यूजफुल फॉर द हाईली इन जो भी फ्रूट की खेती करते हैं उनके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है माइक्रोरेजा। और लोग अभी इसका ज्यादा यूज कर रहे हैं, ओनियंस के लिए भी ये बेनिफिशियल है। और जो ज्यादातर रूट्स को डैमेज करने वाले इंसेक्ट्स रहते हैं सॉइल में, उसे हम निमेटोड्स बोलते हैं, जो ज्यादातर रूट्स को डैमेज करते हैं, तो वो कंट्रोल हो जाता है बिकॉज ऑफ द माइक्रोरेजा। So that's the highly used recently in a agricultural field. देखिए, हमने जब माइक्रोराइजा पर वर्किंग किया लेबोरेटरी में, जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कुछ कौन से इंस्ट्रूमेंट है। अभी इंस्टॉलेशन यहाँ पर शुरू है। पहले तो हमारा बायो फर्टिलाइजर्स का यूनिट है। जो हम बायो फर्टिलाइजर्स अभी जो पहले आपको दिखाए थे लिस्ट ऑफ बायो फर्टिलाइजर, वो सारे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन अभी न्यू परमिशन ली है बायोपेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग की। उसमें हमने ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस और वर्टिसिलियम लेकानी, तो उसका इंस्टॉलेशन अभी यहाँ पर शुरू है। तो कुछ कौन से इंस्ट्रूमेंट है, आपको सभी इंस्ट्रूमेंट पता है। आप बायोटेक के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता है कि आप लैमिनार यूज करते हो, ऑटोक्लेव यूज करते हो, फर्मेंटर यूज करते हो, हॉट एयर ओवन हो। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस टाइम यूज किया जाता है। और थोड़े से अदर यूनिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि मिक्सर, ब्लेंडर, ग्राइंडर। सो दैट्स इंस्ट्रूमेंट आर आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, उसका डेमो भी दिखाने वाला हूँ। ओके, तो जब लैबोरेटरी में हमने थोड़ा सा माइक्रोराइजा, अगर जैसे कि देखते हैं ना कि अगर हम उसका एप्लीकेशन करते हैं, हमें पता है स्पीसीज हमें गवर्नमेंट सप्लाई करती है, हमें एनसीसीएस से लेना पड़ता है, और उसका मल्टीप्लिकेशन करके अगर फंगस है तो हम उसका स्पोर्स में उसका कन्वर्जन करते हैं। और अगर हमें बैक्टीरिया एक बॉटल में पैकिंग करके देना है मार्केट में, तो हम उसका सीएफयू काउंट लेते हैं। बैक्टीरिया का सीएफयू काउंट मीन्स क्या है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर एमएल हमें कितने ऑर्गेनिजम्स उसमें मिल रहे हैं। तो सीएफयू काउंट लिया जाता है फॉर बैक्टीरिया एंड स्पोर काउंट लिया जाता है फॉर फंगस। जैसे कि माइक्रोराइजा इज वन ऑफ द फंगस। सो हमें माइसिलियम पहले ग्रो करना पड़ता है स्पेसिफिक मीडिया पे, फिर बाद में उसका कन्वर्ट हमें वो जो माइसिलियम है उस जो फंगस ग्रो हुआ है उसे कन्वर्ट करना पड़ता है स्पोर्स में। एंड देन वी यूज द कैरियर। कैरियर मीन्स सपोर्टिंग एजेंट। अगर जो हमने स्पोर्स कन्वर्ट किए हैं तो लॉन्ग लाइफ सर्वाइव होने के लिए वो स्पोर्स हमें कैरियर यूज करना पड़ता है। तो कौन सा कैरियर है, मेनी टाइप ऑफ कैरियर आर यूज्ड in market, just like talcum, dextrose, lignite. So that's different type of carrier we use to survive the spores long period. ओके, एंड देन हम वो स्पोर्स मिक्स करते हैं कैरियर के साथ और फिर बाद में उसका पैकेजिंग करते हैं। हम ये भी दिखाएंगे कि पैकेजिंग कैसे होता है और फिर बाद में मार्केट में प्रोडक्ट कैसे डिस्पैच, लेबल के साथ डिस्पैच कैसे हो सकता है। ओके, हमने जब माइक्रोराइजा का जैसे हम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आप भी अपने लेबोरेटरी में कोई इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी आप ले सकते हो। तो उसमें हम जस्ट एग्रोनॉमिक पैरामीटर्स, अगर आपको देखना है कि वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एक स्पेसिफिक स्पेसीज आपको सॉइल से मिली है और वो कितनी बेनिफिशियल है और वो कितनी यूजफुल है और वो कितनी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है, अगर आपको ये देखना है तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको मिला एक पिकोवैक्सिस अगर मीडिया पर फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया मिला है, क्यों, ओके, अनदर वन एग्जांपल वाज दैट आपको एक बैसिलस स्पीसीज मिली है, आपको एक यूनिक अजोटोबैक्टर स्पीसीज मिली है,
आपको देखना है कि उस वो प्लांट की ग्रोथ के लिए यूजफुल है या नहीं। आपको पता है कि आइसोलेशन कैसे करना है। आपको मालूम है कि जैसे कि नाइट्रोजन फ्री अगर मीडिया लेना है, सॉइल डायल्यूट करेंगे, सैंपल्स ट्रीट करेंगे न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक अगर मीडिया पर, प्लेट्स इंक्यूबेशन को रख देंगे। आफ्टर इंक्यूबेशन जो भी कॉलोनीज आए हैं उसके हम पैरामीटर्स चेक करेंगे कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी उसकी कितनी है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइज वो करता है कि नहीं, इंडोल एसिटिक एसिड करता है कि नहीं। अगर हम हमें ऐसे स्पेसिफिक वन ऑफ यूनिक मिल जाती है तो हम अगर एग्री रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो हमें उसके एग्रोनॉमिक पैरामीटर्स प्लांट के डेफिनेटली चेक करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है चार्ट में, मुझे जो माइक्रोराइजा स्पीशीज मिली तो मैंने उसके एग्रोनॉमिक पैरामीटर्स चेक किए। देखिए यहाँ पर दो हम क्रॉप ले सकते हैं, एक में कंट्रोल प्लांट और एक में इनोकुलेटेड प्लांट। इनोकुलेटेड मीन्स हमने जो स्पोर्स कन्वर्ट किए हैं माइक्रोराइजा के उसका एप्लीकेशन कर दिया उस क्रॉप प्लांट को, और कंट्रोल प्लांट में सिर्फ हमने वाटर इतना ही ऐड कर दिया। देखिए अगर हम आफ्टर 15 डेज उन दोनों प्लांट का कंपेयर करते हैं कि इसका बेनिफिट होता है कि नहीं, क्योंकि जो हमें ऑर्गेनिज्म मिला है, जैसे कि हमें यहाँ पर मैंने माइक्रोराइजा का किया है, तो वो बेनिफिशियल है कि नहीं सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इनोकुलेटेड प्लांट और कंट्रोल प्लांट में। कंट्रोल प्लांट में अगर हम 15 डेज बाद अगर प्लांट लेते हैं तो उसका रूट वेट कंट्रोल प्लांट का 7.95 ग्राम, इनोकुलेटेड प्लांट का 18.52 ग्राम। डेफिनेटली मीन्स की रूट वेट वेयर इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ माइक्रोराइजा। आपको हम बताया था ताकि ये सिर्फ रूट्स पर ग्रो होते हैं और उनके माइसिलियम डीप हो जाते हैं रूट्स में, और रूट्स के न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी डबल हो जाती है। अगर रूट्स हेल्दी है तो प्लांट की ग्रोथ भी प्रॉपरली हो जाएगी। ओके, सो वी यूज check this parameter aerial weight. Here we detect the control plant 4.42 gram, inoculated plant aerial weight we check 11.62 gram, stem diameter we also check, limbs number we also check. So on the basis of our that experiment, we confirm that mycorrhiza is highly beneficial to uh, all type of crops, fruit or other any type crop. Okay, so that's parameter we check, agronomic parameter we check the all type of bacteria. अगर हमको यूनिक स्पेसीज मिलती है तो उसके भी हम एग्रोनॉमिक पैरामीटर इसी की तरह हम चेक कर सकते हो, और उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि वो स्पेसीज कितनी बेनिफिशियल है और सॉइल न्यूट्रिएंट कितने लेवल तक वो इंक्रीज कर सकता है। ओके, so that's the short video information about the mycorrhiza. Here we show the binds to the roots, these spores, and spread the mycelium on roots and absorb the nutrients from the soil. ओके, दैट्स फर्मेंटर। अभी एक जो वीडियो शो कर रहा हूँ वो फर्मेंटर Sir, may I audible? Yes, sir, you're audible. Yeah, okay. So that's fermenter, 100 liter capacity. So working capacity of that fermenter is 70 liter.
Okay, so that's the overall information about the all biofertilizers. So आपको जो बताया था कि वो जो 10 प्रोडक्ट्स है उसे ही गवर्नमेंट परमिशन देती है, उसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और उसे ही मार्केट में बेच सकते हो। और एक डाउट होगा ऑल स्टूडेंट्स का, अगर हमें ऐसी वन ऑफ द यूनिक स्पीसीज मिल जाती है तो उसका हम एप्लीकेशन डायरेक्टली कर सकते हैं क्या एग्रीकल्चरल फील्ड में? तो हम वैसे नहीं कर सकते। पहले तो हमें वो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड करना पड़ता है, जैसे कि 18 ईयर्स 16 ईयर्स आरएनए सीक्वेंसिंग हो, 18 ईयर्स आरएनए सीक्वेंसिंग हो। फिर बाद में उस स्पेसीज के हमें एनिमल ट्रायल्स लेने पड़ते हैं। वो स्पेसीज हार्मफुल नहीं होनी चाहिए एनिमल्स के लिए, क्योंकि हम वो क्रॉप पर यूज करते हैं तो मैक्सिमम जो एनिमल्स रहते हैं तो वो क्रॉप एज अ फूड इंजेक्ट करते हैं, तो उनके लिए वो स्पेसीज हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। और उनके उस स्पेसीज के कोई साइड इफेक्ट्स एनिमल्स पर या ह्यूमंस लाइफ पर नहीं होने चाहिए, तभी हम वो स्पेसीज एप्लीकेशन उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में। तब तक हम उसका एप्लीकेशन नहीं कर सकते। सो दैट्स द लिस्ट ऑफ बायोपेस्टिसाइड। अभी जो गवर्नमेंट परमिशन देती है कि हम कौन से बायोपेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसका लाइसेंसिंग प्रोसेसिंग होता है, तो लाइसेंसिंग प्रोसेसिंग करके ही हम 1 से 7 जो बायोपेस्टिसाइड है तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कर सकते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन करके हम वो सेल आउट कर सकते हैं फार्मर को। जैसे कि ट्राइकोडर्मा वायरिडी, वर्टिसिलियम लेकानी, मेटाराइजियम एनिसोफिलिया, पिवेरिया बेसिनिया, बैसिलस स्पेसीज, बैसिलस में बैसिलस सबटिलिस है, बैसिलस थोरेंजिनेसिस है, ये भी हम बायोपेस्टिसाइड्स में ले सकते हैं। फिर सुडोमोनास फ्लोरोसेंस, पैसिलोमाइसिस लिलियासिनस। देखिए ये जो बायोपेस्टिसाइड्स है इससे परमिशन मिलती है और इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस जो होता रहता है वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस रहता है, क्योंकि हम जो स्पेसीज यूज करने वाले हैं वो हमें स्पेसीज गवर्नमेंट से या प्रॉपर लैब से लेनी पड़ती है। फिर प्रॉपर लैब से लेने के बाद उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगेन करना पड़ता है। उसके बाद हमें वो प्रोडक्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर वो लैबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए देना पड़ता है गवर्नमेंट को, फिर उनका वो एनालिसिस करते हैं, तभी हमें परमिशंस मिलती है। उससे पहले हमारा जो यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग का, तो वहां पर विजिट के लिए आ जाते हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स। उनका इंस्पेक्शन होने के बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास अवेलेबल और हमारे पास जो फर्मेंटर अवेलेबल है तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, उसी के हिसाब से हमें परमिशन मिलती है कि हम साल में कितने प्रोडक्शन कर सकते हो। ओके, सो दैट्स अ शॉर्ट वीडियो ऑफ biopesticides role or application, protect the crop from the viruses, fungus, nematodes or insects. जो भी परमिशन अभी आपने जो लिस्ट देखी है जो भी बायोपेस्टिसाइड्स की, तो इनका प्रॉपर एनालिसिस हो चुका है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स ह्यूमन पर एनिमल्स पर नहीं है, ये सिर्फ पेस्ट पर ही अटैक करता है और यही बेनिफिट्स है इस बायोपेस्टिसाइड्स के। इट्स अ बेस्ट अल्टरनेटिव सोर्स फॉर द केमिकल पेस्टिसाइड। और ज्यादातर जो कार्सिनोजेनिक और हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं वो पेस्टिसाइड्स में ही रहते हैं, लेकिन हम अगर क्रॉप पर इंसेक्ट्स आ जाता है तो अगर हम उसे जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाए तो टोटल क्रॉप टोटली लॉस हो जाएगा। लेकिन इसीलिए फार्मर्स ज्यादातर केमिकल पेस्टिसाइड्स लाते हैं और उसका एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि वो 24 आवर्स में सभी इंसेक्ट्स किल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स। ओके, बट दैट्स द अल्टरनेट सोर्स बायोपेस्टिसाइड्स। इट इज ये जो बायोपेस्टिसाइड है इसके ये भी 24 आवर्स या 48 आवर्स में पेस्ट टोटल कंट्रोल करता है। तो ये पेस्टिसाइड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए एग्रीकल्चरल फील्ड में, तभी हम जो हार्मफुल केमिकल्स है उसे अवॉइड कर सकते हैं।
फर्टिलाइजर्स इतने हार्मफुल नहीं होते, लेकिन पेस्टिसाइड्स बहुत हार्मफुल रहते हैं। आपको पता है उस पर रेड सिग्नल ही रहता है, इट्स डेंजरस, लेकिन फिर भी उसका एप्लीकेशन फार्म में होता ही रहता है। तो अगर पेस्ट कंट्रोल अगर हम कहे कि इस बायोपेस्टिसाइड से भी अगर कंट्रोल ना हो पाए पेस्ट, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? केमिकल पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। वैसे कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी बहुत अवेलेबल है। आपको पता है ना कि जैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स में नीम, एडाटोडा, सॉरी एजाटिरेक्टा इंडिका, ये भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स करके यूज करते हैं मार्केट में। ये भी इतना बेनिफिशियल है कि पेस्ट टोटली कंट्रोल हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट नीम। सो दैट्स द अल्टरनेटिव सोर्स। हमें ऐसे ऑर्गेनिक सोर्सेज ढूंढने चाहिए, ऑर्गेनिक प्लांट एक्सट्रैक्ट ढूंढने चाहिए कि जो पेस्ट को कंट्रोल करे। अगर हमें कोई भी काम करना है तो एक कौन से भी एक पेस्ट को पकड़ लो और उस पर कौन सा ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट या कौन सा प्लांट एक्सट्रैक्ट बेनिफिशियल है और वो कंट्रोल करेगा, अगर हम वो देख ले तो वो टोटली कंट्रोल हो जाएगा पेस्ट। ट्राइकोडर्मा वायरिडी, it is a fungicide, it control the fungus. Okay, so we isolate that trichoderma viridi and we check their activity against the that different fungus. अभी जो रेड कारपेट पे जो प्लेट्स दिख रहे हैं वो सभी फंगस है। मैंने वो जो फंगस है आइसोलेट किए हैं वेजिटेबल के ऊपर से। वेजिटेबल पर इतने सारे जैसे कि 10 डिफरेंट टाइप ऑफ फंगल स्पीसीज मुझे डिटेक्ट हुए कि वो वेजिटेबल्स को खराब कर सकते हैं, और इनके अगेंस्ट मैंने एक्टिविटी देखी जो हम मार्केट में यूज करते हैं ना अभी, ट्राइकोडर्मा वायरिडी, इट शोज द एंटी फंगल एक्टिविटी। तो इनके अगेंस्ट एंटी फंगल एक्टिविटी चेक की तो 99% फंगल ग्रोथ इनहिबिट बिकॉज ऑफ द ट्राइकोडर्मा वायरिडी। तो अगर हम एक एनी वन क्रॉप सिलेक्ट करते हैं उसमें कौन सा फंगल इन्फेक्शन आता है, अगर उसके अगेंस्ट कौन सा एंटी फंगल हमें यूज करना चाहिए। जैसे कि ट्राइकोडर्मा वायरिडी एक ही नहीं है जो एंटी फंगल एक्टिविटी दिखाता है, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस है, ये भी एंटी फंगल एक्टिविटी दिखाता है। जैसे कि ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम स्पीसीज, ये भी एंटी फंगल एक्टिविटी दिखाता है। तो हम चेक कर सकते कि विच स्पीसीज इज द बेस्ट फॉर टू कंट्रोल द फंगल इन्फेक्शन ऑन स्पेसिफिक प्लांट। अगर वेजिटेबल्स पर आ जाता है, जैसे कि मैंने ये फंगस आइसोलेट किए हैं वेजिटेबल्स के ऊपर, उसके अगेंस्ट ए ट्राइकोडर्मा स्पीसीज इफेक्टिव है, हम ये इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, तभी वो फंगस टोटली किल हो जाएगा। अगर वैसे ही हम देखें कि हमारे यहाँ ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कौन सा होता है, अगर वो हम क्रॉप सिलेक्ट करें और उनके ऊपर जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो फंगस आइसोलेट कर दे और उसके अगेंस्ट ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम इफेक्टिव वर्क कर सकता है, या ट्राइकोडर्मा वायरिडी इफेक्टिव वर्क कर सकता है, या सुडोमोनास फ्लोरोसेंस इफेक्टिव वर्क कर सकता है। अगर ये सोल्यूशन हम फार्मर्स को देंगे ना और उन्हें 100% रिजल्ट अगर मिलता है, तभी वो उसका यूज करेंगे और एप्लीकेशन करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि लैबोरेटरीज अवेलेबल है, अगर कोई डिसीज हुआ है तो हम देखते हैं कि कौन सा डिसीज है, उसके लिए जैसे कि वाइटेक 2 एडवांस मशीन आई है, उसमें हम ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि कौन से बैक्टीरियल का इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ है। हम उस पर एंटीबैक्टीरियल सेंसिटिविटी टेस्ट भी कर सकते हैं और ये उसकी एमआईसी भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितना मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन हम एंटीबायोटिक का उस डिसीज को उस बैक्टीरियल स्पीसीज के अगेंस्ट दे सकते हैं। अगर वैसे ही हम इस सोल्यूशन लैब में अवेलेबल करवा दे फार्मर्स को, उनको 100% रिजल्ट मिलता है। देखते हैं हम कि ग्रेप्स की फार्मिंग कितनी बड़ी होती है, पोमोग्रेनेट की फार्मिंग कितनी बड़ी होती है। तो एक एक फार्मर का 50-50 एकड़ 100 एकड़ तक प्लांटेशन रह जाता है ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट। तो इतना बड़ा प्रोडक्शन हमारे यहाँ शुरू है। तो अगर हम उनको एक सोल्यूशन दे दे, जो भी फंगस है, जो भी इंसेक्ट्स है, उसके अगेंस्ट हम अगर प्रॉपर टेस्टिंग करें, प्रॉपर प्रोडक्ट की एक्टिविटी चेक करें, अगर उन्हें हम 100% सोल्यूशन देंगे तो वो ट्रस्ट करेंगे, तभी वो फर्टिलाइजर और वो जो पेस्टिसाइड है वो यूज करेंगे।
ज्यादातर लॉस फार्मर्स का कहाँ हो जाता है? अगर फार्मर देखे कि इंसेक्ट्स आ गए हैं पूरे क्रॉप पर और उन्हें सोल्यूशन चाहिए, अगर वो किसके पास जाएंगे? फार्मर्स डायरेक्टली जाते हैं रिटेलर के पास, जो भी सेल करते हैं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड। वो क्या करते हैं, और जो रिटेलर है वो डायरेक्टली एक प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं कि लेके जाओ, इसका एप्लीकेशन कर दो, एक कंट्रोल में हो जाएगा। वो बॉटल कितनी की रहेगी? 400-500 रुपीज की, 1 एकड़ के लिए। अगर वो जाएंगे उसका एप्लीकेशन करेंगे और उन्हें रिजल्ट नहीं मिला तो क्या करेंगे वो? उनके 400-500 टोटल लॉस। और जो फार्म का क्षेत्र होता है वो थोड़ा नहीं, बहुत सारा रहता है, 5 एकड़ 10 एकड़। तो उसी के हिसाब से वो पेस्ट कंट्रोल लेते हैं। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो उन्होंने जो पैसे दिए हैं उसके लिए पेड करे हैं, तो टोटल लॉस हो जाएगा उनका। अगर आप उसे सोल्यूशन देंगे, आप चेक करेंगे कि वो फंगस है क्रॉप का, वो आपने लेबोरेटरी में लिया, आपको मालूम है कि फंगस कैसे ग्रो करना है, आप विल यूज द स्पेसिफिक मीडिया सैबोरेटस अगार, पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार, उस पर अगर हम फंगस ग्रो करेंगे और वेल्स प्रिपेयर करके उसमें हम जो भी पेस्ट कंट्रोल है उसका एप्लीकेशन करेंगे वेल्स में। आफ्टर इंक्यूबेशन हमें जोन ऑफ इनिबिशन के ऑब्जर्वेशन से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इफेक्टिव है, कौन सा एक्सट्रैक्ट इफेक्टिव है, कौन सा जो पेस्ट कंट्रोल है वो इफेक्टिव है। अगर हम वो डायरेक्टली उन्हें सजेस्ट करें कि यही आप यूज कर दो, तभी आपका 100% वो कवर हो जाएगा, तो वो बेनिफिट रहेगा फार्मर्स को। तो इसकी जरूरत है अभी। ऐसे नहीं कि बिजनेस है, क्योंकि वो भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसमें लॉस हो जाता है तो फार्मर्स अब देख रहे हैं कि फार्मिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमें वो इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि फार्मिंग कितनी जरूरी है और अभी एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट है फॉर आवर इन फ्यूचर। ओके, so that's the another one bacteria, another one fungus, that's the verticillium lecani. That's the fungus. It shows the insecticidal activity. बघा, it is useful for to control the insects. और इसका मैकेनिज्म क्या है वर्टिसिलियम लेकानी का? तो ये जो है एक काइट, जो इंसेक्ट्स की स्किन रहती है, आउटर कवरिंग रहता है, तो वो काइटिन प्रोटीन से बना होता है। तो काइटोसिनेज एंजाइम प्रोडक्शन करता है वर्टिसिलियम लेकानी। तो इसी की वजह से फंगस ग्रो हो जाता है इंसेक्ट्स की बॉडी पर, और वहां पर इंसेक्ट्स टोटली किल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वर्टिसिलियम लेकानी, because it has a capacity to produce chitokinase enzyme. Okay, for isolation of that fungus, we use the specific media, that's the Sabouraudus agar. Beauveria bassinia, it is also to control the insects. Okay, different type of insects present on different crop. It has a same capability. It has also capacity to produce chitokinase enzyme, and it degrades the chitin protein, okay, which is present on a insect's body. Metarhizium, anisophilia, it is also useful to control the insects. Also, it is useful for the control the different type of insects. Okay. Paschilomyces liliaceus, एक यूनिक फंगस है। अभी बायोपेस्टिसाइड की जो लिस्ट है आपको दिखाई थी, उसमें मैंने दिखाया था पैसिलोमाइसिस लिलियासिनियस, लेकिन अभी ये टोटली बैन हो चुका है, क्योंकि इसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स एनिमल्स पर दिख गए हैं। तो अभी ये बायोपेस्टिसाइड के लिस्ट से इसे अभी ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते कोई भी इंडस्ट्री, क्योंकि और इसका लाइसेंस प्रोसेस नहीं ले सकते। लेकिन ये जो यूज करते थे पहले पैसिलोमाइसिस लिलियासिनियस, ये यूज करते थे टू कंट्रोल द निमेटोड्स। हमें मालूम है कि जो स्मॉल पैरासाइट्स रहते हैं सॉइल में, जो रूट्स को डैमेज करते हैं। रूट्स, जो प्लांट के रूट्स होते हैं एज अ फूड रहता है इन निमेटोड्स के लिए, तो उसके कंट्रोल के लिए ये फंगल यूज किया जाता था, दैट्स द पैसिलोमाइसिस लिलियासिनिस। तो ये फंगस यूज किया जाता था, लेकिन अभी ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये लिस्ट से हटा दिया गया है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स एनिमल्स पर दिखे हैं। और निमेटोड्स कैसे रहते हैं, पैरासाइट्स कैसे रहते हैं, देखो दैट्स द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ
parasites. That's the nematode. So in our laboratory, we isolate that nematode and we check the activity of other fungus against that nematode. आप खुद चेक कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि अगर नेमाटोड के लिए अभी कोई अवेलेबल नहीं है मार्केट में प्रोडक्ट, तो उसके लिए अदर कोई फंगस है क्या जो इसे कंट्रोल करने के लिए मदद कर सकता है। क्योंकि अभी बहुत सारे फार्मर्स के लिए ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इसका बहुत प्रॉब्लम होता है। जिनके फ्रूट्स के फार्म रहते हैं बहुत सारे, तो उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। तो उसके लिए सॉल्यूशन अभी देर ए केमिकल सोर्स में अवेलेबल है टू कंट्रोल दिस नेमाटोड। Pseudomonas fluorescens, it is a bacteria. It is also control the fungus. It is used as a fungicide in the market. Bacillus species, two type of different Bacillus species. Bacillus subtilis, which is useful for the degradation of organic matter. Also, some Bacillus species detect the antifungal activity. Bacillus thuringiensis, it is used in a BT cotton. आपको पता होगा BT कॉटन, तो उसी में मैक्सिमम कॉटन में जो इंसेक्ट्स रहते हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए बैसिलस thuringiensis का ज्यादातर यूज किया जाता है। ओके, सो दीज आर द बैसिलस स्पीसीज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। Okay, so that's the overall introduction about the related to the biofertilizer biopesticides sites. अभी मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं हम यहाँ पर फॉर्म में, ओके ओके, यहाँ पर अभी मैं थोड़े से इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाता हूँ कि जो कौन से इंस्ट्रूमेंट हम हमारे लैबोरेटरी में यूज करते हैं। और अभी तक यहाँ का इंस्टॉलेशन शुरू है। ये जो यूनिट है वो बायोपेस्टिसाइड्स के लिए अभी किया है। अभी इसका इंस्टॉलेशन शुरू है। इसके लाइसेंस प्रोसेसिंग बहुत सारी रहती है, जैसे कि हमें CIB रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है फरीदाबाद से। वहां से अगर हमें अप्रूवल मिल जाता है तभी हम सेलिंग की परमिशन स्टेट वाइज हमें लेनी पड़ती है डिफरेंट। अभी CIB का रजिस्ट्रेशन बायोपेस्टिसाइड्स का हो चुका है, लेकिन सेलिंग की परमिशन अभी बाकी है। तो उससे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते वो, जब तक हमें सेलिंग की परमिशन नहीं मिलती। अभी हमारे पास बायोफर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग की परमिशन है, तो हम अभी कर रहे हैं हमारे दूसरे यूनिट में। और ये जो इंस्टॉलेशन चल रहा है वो बायो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत रहती है और कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। आप यूज करते हैं हर रोज, लेकिन थोड़ी सी जो यूनिक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दीज आर दी इंक्यूबेटर, आपको पता है फॉर मेंटेन द टेम्परेचर। ओके, मैं ऑडिबल सर मैडम? Yes, sir, you are audible. ओके। सो आपने देखा नहीं होगा पहले, आपको बॉटल्स लग रही होगी ये सिर्फ, लेकिन ये बॉटल्स नहीं है, पॉलीप्रिपेलिन बॉटल्स है जो हीट रेजिस्टेंट रहती है। हम अगर हर बार अगर ऑटोक्लेव में हमें कोई भी स्टरिलाइजेशन के लिए रखना है, हम तो कोनिकल फ्लास्क प्रिपेयर करेंगे, उसमें ब्रॉथ प्रिपेयर करेंगे और वो ऑटोक्लेव में हम रख देते हैं। ओके, फिर हम स्टरिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो वर्किंग कैपेसिटी रहती है फ्लास्क की वो कम रहती है, जैसे कि 1 लीटर 5 लीटर के भी कोनिकल फ्लास्क रहते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से ऑटोक्लेव में नहीं फिट हो जाते। तो स्टॉक कल्चर प्रिपेयर करने के लिए स्टॉक यहाँ पर 2 स्टेप रहते हैं बायोफर्टिलाइजर बायोपेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग में। और 2 स्टेप्स मीन्स
कि पहले तो हमें स्टॉक कल्चर प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर बाद में हमें प्रोडक्शन मीडिया प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रोडक्शन मीडिया हम प्रिपेयर करते हैं फर्मेंटर में, और स्टॉक कल्चर प्रिपेयर करते हैं हम शेकिंग में और शेकिंग इंक्यूबेटर और ऑल्सो इन इंक्यूबेटर। तो पहले हमें ऐसे पॉलीप्रिपिलिन बॉटल जिस पर हमने कॉटन साब लगाया है, फिर इसे हम स्टेरिलाइजेशन के लिए रख देते हैं ऑटोक्लेव में। आफ्टर स्टेरिलाइजेशन आपको पता है कि 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम प्रॉपर देते हैं उसे फॉर 15 मिनट्स। देन ये हम रूम टेम्परेचर के लिए रख सकते हैं जिन बैक्टीरिया के लिए, जैसे जैसे डिपेंड ऑन बैक्टीरिया के विच बैक्टीरिया वी मल्टीप्लाइड और विच कौन से बैक्टीरिया का हम स्टॉक कल्चर प्रिपेयर करना चाहते हैं। स्टॉक कल्चर में एक्चुअल क्या होता है, तो जो प्रॉपर मीडिया रहता है वही हम उसे उस आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि फॉस्फेट सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया अगर आइसोलेट करना है तो हमें पिकोवैक्सिस मीडिया ही चाहिए। तो हम स्टॉक कल्चर प्रिपरेशन के दरमियान हमें सिर्फ पिकोवैक्सिस मीडिया ही यूज करेंगे। तो उसके लिए हम ऐसे पॉलीप्रिपिलिन बॉटल्स यूज करते हैं जो हीट रेजिस्टेंट रहती है। एक डायरेक्टली बॉटल हम ऑटोक्लेव में रख सकते हैं, तो ये हीट रेजिस्टेंट है, खराब नहीं होती, लॉन्ग लाइफ सर्वाइव होती है। अगर फ्लास्क यूज करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है किसका कि थोड़े से अगर किसी अदर मटेरियल को टच करे तो फूट जाते हैं। बोरोसिल के रहते हैं तो अच्छी क्वालिटी के रहते हैं तो वो भी अच्छे रहते हैं, लेकिन हम भी अगर हैंडलिंग के टाइम थोड़ा भी उसे टच हुआ तो डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए स्टॉक कल्चर में प्रोडक्शन मीडिया में हम ऐसे पॉलीप्रिपिलिन बैग ही यूज करते हैं। दैट्स द ऑटोक्लेव, दैट्स द hot air oven for sterilization of glass material. So that instrument is also used in a biofertilizer or biopesticides manufacturing industry. Okay, image clearly. Okay, so that instrument used, that's the blender. This at the time of जब हम स्पोर प्रिपेयर करते हैं फंगस के, तो वो स्पोर्स हम कैरियर के साथ मिक्स करने के लिए हमें ये स्टेनलेस स्टील का ब्लेंडर चाहिए होता है। जैसे कि इसका वर्किंग प्रोसीजर है, दिख सकता है यहाँ पर ब्लेड्स रहते हैं प्रॉपरली। अगर हम उसमें कैरियर और जो हमने फंगस ग्रो किया है वो मिक्स कर दे, ओके लाइट ओके, अगर हम जैसे कि देख रहे हैं आप कि ब्लेड्स रोटेट हो जाते हैं और जो भी कैरियर के साथ हम फंगल मिक्स कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाता है। ओके, एंड देन इसका एक आउटलेट रहता है, उस आउटलेट से हम ये असेप्टिक कंडीशन में लेकर ये पाउडर हम लैमिनार एयर फ्लो में ही उसका फिलिंग और पैकिंग करते हैं। ये भी इंक्यूबेटर ही है। सम ब्रॉथ स्टोरेज के लिए हम इसे कैन भी यूज करते हैं कि ब्रॉथ जो है वो प्रॉपरली ब्रॉथ में कंटेमिनेशन, विदाउट कंटेमिनेशन ऑर्गेनिजम्स हाईली मल्टीप्लाई हो जाए। ओके, जो भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि कॉलोनी काउंटर, शेकर, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप्स, ओके, सो अदर chemical contents or other media which is useful for the multiplication of bacteria, shaker, shaking incubator, okay. जब भी हम स्टॉक कल्चर प्रिपेयर करेंगे फर्मेंटर में, हम जब प्रोडक्शन मीडिया प्रिपेयर करते हैं तो जो प्रोडक्शन मीडिया हमने फर्मेंटर में बनाया है उसमें हमें एडिशन करना पड़ता है स्टॉक कल्चर का, जो हमने पॉलीप्रिपिलिन बॉटल्स में बनाया था। पहले उससे पहले हम उसका CFU काउंट मेजर करेंगे कि उसमें ऑर्गेनिजम्स का काउंट कितना आया है, और ऑर्गेनिजम्स का काउंट डिटेक्ट करने के बाद ही वो स्टॉक कल्चर हम एडिशन करेंगे प्रोडक्शन मीडिया में जो फर्मेंटर में रहता है। ओके, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस वी चेक द again we check the count, bacterial count, CFU count, that's broth, okay, and then
we use the preservatives to preserve this product long life, and then pack this product in various bottles. जसं की प्रोडक्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन आप जो भी वो ब्रॉथ है वो प्रॉपर पैकिंग करेंगे ऐसे बॉटल्स में. ये भी असेप्टिक में करना पड़ता है, लैमिनार एयर फ्लो में. जो भी फर्मेंटर का आउटलेट रहता है वो डायरेक्टली जाता है लैमिनार एयर फ्लो में, और वहीं पर ये बॉटल में फिलिंग होता है उस ब्रॉथ का. उससे पहले उस ब्रॉथ में हमने प्रिजर्वेटिव ऐड किया होता है. जैसे कि कौन से प्रिजर्वेटिव हम यूज कर सकते हैं, हम उसमें सोडियम बेंजोइट, पॉलीप्रिपिलिन, okay, and then potassium sorbate. So that's different preservative we use depend on organism. हम कौन सा प्रिजर्वेटिव उसमें यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट म्हणजे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन हम जो वो प्रोडक्ट है वो पैक कर सकते हैं ऐसे बॉटल्स में. जैसे कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ब्रांड नेम के साथ, बायोनीफ, आरएस जिंक, कल्पतरु, एसिटो. ओके, एंड ऑल्सो दैट्स द माइकोराइजा, माइको गोल्ड, दैट्स द ब्रांड नेम. माइकोराइजा इन स्पोर फॉर्म हम कैरियर के साथ उसे मिक्स करते हैं. हम कैरियर भी दिखाते हैं कि डेक्सटोज, आपको पता है डेक्सटोज कैसा होता है. तो हम कैरियर के साथ जो फंगस होते हैं वो स्पोर्स मिक्स कर देते हैं प्रॉपरली, और वो ग्रो करते और आफ्टर मिक्सिंग विथ कैरियर in that form we packed this product mycorrhiza. So these are all products: zinc solubilizing bacteria, potash mobilizing bacteria, कल्पतरु, दैट्स द एनपीके कॉन्सर्शिया. इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग, पोटैश मोबिलाइजिंग, फॉस्फेट सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया हम एक साथ दे सकते हैं. एसिटोबैक्टर फॉर शुगर केन, अजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. So that's the overall introduction about the biofertilizer and biopesticides manufacturing. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for giving such a meaningful and knowledgeable speech on microbial consortia and what are the importance of biofertilizers and biopesticides. I hope the all students or participants understood it very well. Thank you so much, sir. The session is open for discussion. Participants, if you all are having any doubt, you can ask directly here. The session is open for discussion. Sir, one question. Yeah. Yes, The sir. NPK count in soil, which methods are used? The NPK count in soil. We use the soil analysis, proper soil analysis testing. कि वो soil लैबोरेटरी में जो टेस्ट होते हैं तो उसी के हिसाब से हम एनपीके डिटेक्शन कर सकते हैं सॉइल में कितने परसेंटेज है. अगर हम देखें कि फॉस्फोरस टाइट्रेशन मेथड्स भी है अवेलेबल, हम लैबोरेटरी में भी कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम. एंड वी ऑल्सो चेक द सॉइल न्यूट्रिएंट लेवल इन सॉइल लैबोरेटरी. और अभी जो हमारे पास अवेलेबल है तो हार्वेस्टो, दैट्स द आईसीएआर पेटेंटेड प्रोडक्ट है वो, तो उसी के हिसाब से हम अभी सॉइल एनालिसिस करते हैं. Okay, thank you, sir. One more question, sir, from Akbar Sheikh, our student. Yes. As you said that the farmers, the customers prefer buying chemical fertilizers because they are cheap and give a quick results. So how Okay. do you convince the farmers to buy a biofertilizer knowing that they are time consuming and expensive? So how you convince the customer? Okay. बायोपेस्टिसाइड्स आर टाइम कंज्यूमिंग. अभी जो बायोपेस्टिसाइड्स है वो रिजल्ट्स क्विकली देते हैं, लेकिन प्रॉपर जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स लो कॉस्ट अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन पेस्टिसाइड्स लो कॉस्ट अवेलेबल नहीं है. हाईली कॉस्टिंग रहता है केमिकल पेस्टिसाइड्स का. और उसका ड्रॉबैक ये है कि हम जो केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जैसे कि एसिटेमाप्राइड इज वन ऑफ द एग्जांपल. एसिटेमाप्राइड
is useful for to control the aphid infection on a crop, एफिड इन्फेक्शन। लेकिन अभी 70% ही एफिड कंट्रोल हो रहा है एसिटेमाप्राइड से। लेकिन उसके लिए जो अल्टरनेट सोर्स है वर्टिसिलियम लेकानी बायोपेस्टिसाइड्स, so on the basis of our observation or our results, 100% control with the help of verticillium lecani टोटल एसिडेमाप्राइड। आणि इसका एक बेनिफिट और एक रहता है फंगस का और एनी बायोपेस्टिसाइड्स का। अगर हम उन स्पोर्स का एप्लीकेशन करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो वो स्पोर्स लॉन्ग लाइफ के लिए फार्म में वैसे के वैसे प्रेजेंट रहेंगे। स्पोर्स इजीली किल नहीं होते। 10 जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी फंगस वहां पर ग्रो होगा। अगर वहां पर स्पोर्स है तो इंसेक्ट्स वहां पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन आफ्टर 15 days केमिकल एनी केमिकल पेस्टिसाइड न्यूट्रलाइज, ते न्यूट्रलाइज टोटली होऊन जातं। सो द बेनिफिट ऑफ बायोपेस्टिसाइड की अगर हम स्पोर्स वन टाइम यूज करते हैं तो वो लॉन्ग लाइफ के लिए वो फार्म में एप्लीकेशन रहेगा। लॉन्ग लाइफ के लिए वो स्पोर्स फार्म में रहेंगे। लॉन्ग लाइफ के लिए वो पेस्ट से कंट्रोल करता रहेगा। अब हमें पता ही है कि फंगस मल्टीप्लाई कैसा होता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। मालूम है कि उन्हें अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो कंटिन्यूसली वहां पर उस क्रॉप फील्ड में कंटिन्यूसली वो मल्टीप्लाई हो जाए। अब अगर हमें पता है कि वो वहीं पर रहते हैं, उनका एप्लीकेशन ही सॉइल है, तो उनका नंबर कम क्यों हो रहा है? तो उनका नंबर कम इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि सॉइल के पैरामीटर्स चेंज होते हैं। हाईली यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हाईली यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, इसी की वजह से। Okay, she थैंक said यू, thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू। Yes. Participants, any more questions? Yes, sir. I have one question. हाँ, यस सर। Sir, where we get these products, these biofertilizers and biopesticides? any retail market they are available। Okay. So हाँ, in Solapur or out of Solapur also it is yes, available? yes, many industries recently produce this biofertilizer or biopesticides। Okay. Thank you, sir. ओके, डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी कितनी, हमें कैपेसिटी कितनी करनी है प्रोडक्शन की। अगर हम लार्ज लेवल पर फर्मेंटर्स लेते हैं, मिनिमम 30-40 lakhs तक सभी बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स का इंस्टॉलेशन हो जाता है। 30-40 lakhs पर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर हमें बायोफर्टिलाइजर की स्टार्टअप करनी है तो। और उसका जो बायोफर्टिलाइजर है वो तो हम कर सकते हैं 30 lakhs 40 lakhs तक। लेकिन बायोपेस्टिसाइड जो रहता है तो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग रहता है। उसके लिए हमें पहले CIB रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसकी थोड़ी सी कॉस्टिंग ज्यादा आती है बायोपेस्टिसाइड्स की। क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग फीस बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि हमें हर एक सैंपल लेने के बाद उसका DNA फिंगरप्रिंटिंग करना पड़ता है। 2-3 लैबोरेटरी से हमें वो रिपोर्ट्स लेने पड़ते हैं। फिर बाद में उसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, सैंपल्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उसका सैंपल्स का ट्रायल्स डाटा लेना कलेक्ट करना पड़ता है और वो डाटा हमें एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ता है, तभी वो हमें इसकी परमिशंस देते हैं। Yes. Anyone having any question? Okay, sir, can our students directly join this industry, the freshers? Yes, yes, yes. Okay, ma'am.
Yes, yes. We use biofertilizers, polluted area. वी यूज द स्पेसिफिक स्पेसीज. अगर हम अच्छे स्पेसीज यूज करते हैं जैसे कि स्पोर फॉर्मिंग स्पेसीज, बैसिलस सबटिलिस, इट इज अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया. इट अडेप्ट हाई टॉलरेंट और हाई सलाइनिटी कंडीशंस. अगर सॉइल में है तो भी वो सर्वाइव करती है स्पेसीज वहां पर. और सॉइल अगर एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है एग्रीकल्चर में, अगर हमें सॉइल पहले की तरह हेल्दी बनानी है, हमें मालूम है कि कोई भी अगर प्लांट मटेरियल अगर सॉइल में इंसर्ट हो जाता है या एनिमल्स है या कोई भी कंपाउंड है, अगर उसे डिग्रेड करना है तो बैक्टीरिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. बैक्टीरिया ही ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसकी की वजह से केमिकल कंपाउंड हो, प्लांट मटेरियल हो या कुछ भी हो, उसका डिग्रेडेशन करने के लिए यूजफुल है ऑर्गेनिजम्स ही. अगर सॉइल में सलाइनिटी इंक्रीज होती है, अगर हम ऐसे कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसमें एडिशन कर देंगे, उसका एप्लीकेशन कर देंगे, तो वो बैक्टीरिया खुद के लिए ऐसा इन्वायरमेंट रिलीज करते हैं कि वो उनके लिए फेवरेबल हो. तो इसी के लिए बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम्स, ऐसे प्रोटीन्स रिलीज करते हैं कि जो सॉइल की हेल्थ बढ़ाने के लिए यूजफुल और बेनिफिशियल रहते हैं. अगर सॉइल खराब हो चुकी है तो उससे हमें फिर से वही पोजीशन पर लाने के लिए ऑर्गेनिजम्स का ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आगे फ्यूचर में भी. तो बहुत स्कोप है एग्रीकल्चरल में. अगर हम इनोवेशंस करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा से ज्यादा करके क्रॉप डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली रिसर्च के लिए भी और ऑल ग्रोथ के लिए दैट्स द हाईली बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म. थैंक यू. यस यस, आप विजिट कर सकते हो. Any more questions? Okay. So with this, thank you all for asking the questions and your doubts to the sir. With this, I would like to invite Miss Vishali Dhodle ma'am to give a vote of thanks. Miss Vishali Dhodle ma'am. Thank you, Shraddha ma'am. A warm and restful afternoon to all. I feel a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this occasion. This seminar has been a great success so far as it imparted a lot of knowledge to all the students. On behalf of Walchand College of Arts and Science Autonomous Solapur Department of Biotechnology, I extend my heartfelt vote of thanks to Honorable Chief Guest of today's online seminar, Dr. Rahul Sheikhe sir. My gratitude to our chief guest for gracing the occasion and enlightening us. It was really informative seminar in true sense. Your deep and intellectual way of imparting knowledge has added to the glory of this seminar. I am pretty sure that the precious knowledge you have told us will definitely help us in our future. So thank you very much, sir. I am immensely thankful to our principal, Dr. S.V. Koti, sir, for motivation, encouragement, and support. A special mention to our respected Vice Principal, Dr. R.V. Ippargi, sir, Science Section, Dr. M.P. Joshi, sir, Arts Section, for supporting us. And I would like to extend my thanks to Dr. N.B. Patkar, sir, the President of IIC Committee. Last but not the least, I thank you all the students for showing interest in today's Impact Lecture Session 2.
So, with the permission of dignitaries, I declare that the session 1 of the series is over. So, have a good day, everyone. Thank you. Thank you so much, organizing committee principal, sir, Ippargi sirs, Patkar sirs, madam. Thank you so much for giving me opportunity to present my work or my study area. So thank you so much, all of you. Thank you. Thank you, Vrushali ma'am, for extending the vote of thanks, and thank you, Dr. Rahul Sherke sir, for expressing your knowledge. With this, I would like to request Ms. Aparna Bhairappa madam to take the charge of next session. Thank you, Shraddha ma'am. Am I audible? Yes. Yes, thank you so much for giving this session to me. So, good afternoon, all. I, Miss Aparna Bhairappa, on behalf of Ailakpanara Digambar Pathshala's Walchand College of Arts and Science, Solapur, Department of Biotechnology, I welcome you for today's session. Now, first of all, I welcome our today's guest, Mr. Sharan Basava sir, from patent agent of Patil IPR Associates, Faridabad, Haryana. Welcome you, a warm welcome you, sir, for this session. And Thank you. also, I welcome all our faculty members and the dear students for this online impact session 2, which is organized by Walton College of Arts and Science, Autonomous College, Department of Biotechnology, in collaboration with Institution Innovation Council and sponsored by MOE's Innovation Cell, All India Council for Technical Education, New Delhi, India. This second session will be conducted by our honorable guest, Mr. Sharan Basar sir, who is a patent agent from Patil IPR Associates, Faridabad, Haryana, and will give a brief talk on the role of patent in supporting research and innovations. So, without taking much time, I hand over this session to our today's guest, to Mr. Shusaran Basar sir. So, please. Yeah, good afternoon, all. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I would like to share my screen. Can you see my screen? No, sir. Okay, one second. Okay, one second. Can you see now? Yes, sir, we can see now. Okay. Yeah, myself Sharan Baswa. I'm a patent agent. I'm working in this field since last 2008 onwards, and I have filed a number of applications in India and abroad. So today's my talk is on the role of patent in supporting research and innovations. Yeah. Uh, just to give you a brief about the property. A property means it may be tangible or intangible. Intangible, you can see a movable and immovable property. For movable property, you can say it may be car, bus, or any other vehicles. In case of immovable, it is it may be building,
institution, industry, all this comes in a immovable property. Whereas intangible, the intellectual property, it falls under intangible property. So now comes the what exactly the intellectual property. It is the term that describes the ideas, inventions, technologies, artworks, music, and literature that are intangible when first created, but become valuable in tangible form as products. IPR allows people to own their creativity and innovation in the same way as they can own their physical property. The owner of the IP can control and be rewarded for its use, and this encourages a further innovation and creativity. IPRs are the rights awarded to the individual or organization over creative works, inventions, literary and artistic works, symbols, names, images, and designs used in commerce. Rights are given to the creator to prevent others from making unauthorized use of their property. In intellectual property, there are various types. For example, patents, copyrights, designs, trademark, geographical indications, and know-how and trade secret. So our main today's topic is on patents. So I am majorly I emphasizing on patents. Patent is an exclusive right granted by the government state for the commercial exploitation of an invention for a limited time and gives the inventor an exclusive monopoly of the invention. Here, there are three checkpoints. For example, I mean, whether your patent is eligible or to check that, first you have to see the novelty and inventive step and industrial applicability. If you fulfill these three criteria, then you can say your invention is eligible for patent grant. So, inventor or applicant has to disclose his invention. A patent office will give 20-year exclusive rights. It's a give and take sort of thing. A patent gives an inventor the right for a limited period to stop others from making use or selling an invention without the permission of the inventor. Patent rights are territorial. Patents can be bought, sold, mortgaged, or licensed to others. Patents also benefit the people other than the inventor, since patent database form an enormous source of information. It stops reinvention or duplicacy of the work, you can say. On expiry of the patented period, the benefits of the invention totally goes to the public. Yeah, just I would like to mention top 10 points of the patents. What exactly means? There is no such thing as an international patent or a world patent. Patent applications are not the same as granted patents. Patents are examined. They are not peer reviewed like your scientific journals. The applicant or assignee of a patent may not be the actual holder of the patent rights. Patents have a limited lifetime. Patents are rights with geographic boundaries. In case if you are filing in India, I mean you have the rights only in India. Infringement of a patent is generally a legal matter between parties. Claims define the limits of a patented invention and the boundaries of the patent rights. A patent does not guarantee that anyone will license the invention. Patent rights are exclusionary rights. Some students or people may think that to file a patent application, you need to have a big or
it's out of reach like that they think, but it's not the case. You see, a patent for safety pin issued in April 10, 1849, a New Yorker Walter Ant invents a Yandy device application number 6281 for the safety pin. I mean, as simple as a safety pin also, they have filed hundreds of years back. And exclusive privilege given to the applicant by the government for a limited period to exclude others from making, using, or selling the invention without permission in return to the complete disclosure of the invention. What are the roles of IPRs in the patent system? It streamlines the science and technology database. It encourages for improvement of technology. It provides a reward as exclusive right for disclosure, making profits or earning royalty through putting the invention into practice, transferring into public property after expiry of term of cessation of patent. What are the advantages? It avoids duplicacy of the research. It keeps abreast with latest development in different fields of technology. It helps industry to improve existing technology to produce cheaper and better product. It serves as an indicator of achievements in research and development institutions and ability of individual researchers. It records the information for future reference. Simple inventions, a patent got huge profits. For example, a ring pull can. The inventor licensed the patent to Coca-Cola at 1 by 10 of a penny per can. It earned almost 1,48,000 UK pounds per day as royalties. In terms of rupees, it is almost 1.2 crore per day. And another simple invention, again, it got use money as a royalty, that is paperclip. 400 paperclip patents you can find. And it is valued at almost $80 million or 535 crores. Another similar example is spin brush. Four inventors sold to Procter and Gamble for $475. Sorry, $475 million. It's almost 3,000 crores. Yeah, now I am talking about the industrial design. The features of shape, configuration, pattern, or ornament, or composition of lines, or color, or combination thereof applied to any article in 2D or 3D or in both forms. Designs. An industrial design is that aspect of a useful article which is ornamental or aesthetic. The owner of the industrial design can prevent unauthorized copying or imitation of the design if it is registered. A design must be new, original, and industrially reproducible in order to become eligible for protection under industrial design law. Yeah. Another type of intellectual property right is trademark. It's a word, name, symbol, or device which is used in trade with goods to indicate the source of the goods to distinguish from the goods of the others. Yeah, you can see the logos like Tata, Bata, and a service mark, for example, a Blue Dot, a DHL. Yeah. Service marks, it indicates the source or origin of a service. For all practical purposes, trademarks and service marks are subject to the same rules of validity, use, protection, and infringement. Property mark, a mark used for denoting denoting that a movable property belongs to a particular person, is called property mark. Geographic indications. A geographical indication is a sign used on goods that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that place of origin.
Appellations of origin are specific types of geographical indications. An appellation of origin is a more precise geographical indication which specifies that the product in question has certain qualities and that those qualities are due to essentially or exclusively to its place of origin. GI are place names used to identify the source of origin and quality, reputation, or other characteristics of products. For example, you can see Ilkal sari, Dharwad peda, Badgi chili, Tirupati laddu. Yeah, like that. There are many GI products in India. Copyright and related rights. It provides its holder the right to restrict unauthorized copying and reproduction of an original expression. It may be literary work, movie, music, painting, software, etc. Copyrights are exclusive legal rights on creativity, a bundle of rights, a moral and economic. It protects originality of expression and not ideas. A national in nature, a literary and artistic work, writing, music, works of the fine arts, paintings, and sculptures. Technology based, like computer programs and electronic databases, are falling under copyright. Acquisition of copyright is automatic and it does not require any formality. However, certificate of registration of copyright and the entries made therein serve as a prima facie evidence in a court of law with reference to dispute relating to ownership of copyright. In the case of originally literary, dramatic, musical, and artistic work, the 60-year period is counted from the year following the death of the author. In the case of cinematograph, films, sound recordings, photographs, posthumous publications, anonymous and pseudonymous publications, works of government, and works of international organizations, the 60-year period is counted from the date of publication. Subject to certain conditions, use is permitted for research, study, criticism, review, and news reporting. Library and schools, legislatures, without specific permission of the copyright owners is required. It is allowed for this type of works. We are coming to trade secret. It is a formula, pattern, physical device, idea, process, a compilation of information, or other information that provides the owner of the information with a competitive advantage in the marketplace and is treated in a way that can reasonably be expected to prevent the public or competitors from learning about it. In India, we have no legal provisions to protect trade secrets for the time being. What are the requirements of patent filing? Yeah, I mean, as I said, there are three checkpoints. That is, whether your invention is fulfilling the criteria of novelty, inventive step, and industrial use. What exactly the definition of invention according to the Patent Act? It means a new product or process involving an inventive step and capable of industrial application. And what is inventive step? It means a feature of an invention that involves technical advance as compared to the existing knowledge or having economic significance or both that makes the invention not obvious to a person skilled in the art. And then comes the industrial application, whether your invention is applicable in an industry or not. In relation to an invention, it means that the invention is capable of being made or used in an industry. Now comes what are the inventions are not patentable inventions, we can say.
according to the section 3 of the Patent Act 1970, the inventions which are frivolous or which claims anything obviously contrary to well-established natural laws, this type of inventions are not allowed. Water as a petrol without any mechanism, for example, this type of inventions will not be approved. Anything which is against the public order and morality, this type of inventions are not granted. An invention, the primary or intended use or commercial exploitation of which would be contrary to public order or morality, or which causes serious prejudice to human, animal, or plant life or health or to the environment. For example, embryonic stem cell culture, sex determination technology, a method of adulteration of food, drug, medicine. These are not patentable. These are against the morality. And again, another important thing is discoveries. Discoveries are not patentable. The mere discovery of a scientific principle or the formulation of an abstract theory or a discovery of any living thing or non-living substances occurring in nature, for example, isolated microorganism or chemical already existing in the nature, but only they have done the isolation. So these are called discoveries and these are not patentable. What is the difference between invention and discovery? You see, Thomas Alva Edison, he invented the bulb. It is an invention. Whereas Alexander Fleming, he discovered the penicillin. It is a mold or fungi, or it is available in the nature. He discovered for the first time. So it is not called as an invention. New form of known substance. The mere discovery of a new form of a known substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance, or the mere discovery of any new property or new use for a known substance, or of the mere use of a known process, a machine or apparatus, unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant. For example, for the purpose of this clause, salts, esters, ethers, polymorphs, metabolites, pure form, particle size isomers, complexes, combinations, and other derivatives of known substance shall be considered to be the same substance unless they differ significantly in properties with regard to efficacy. For example, I mean, as you know, only just a new form cannot be called it as a invention. Admixture and no synergistic effect. A substance obtained by a mere admixture resulting only in the aggregation of the properties of the components thereof, or a process for producing such substance, polyherbal composition, and just arrangement and rearrangement of devices. This type of inventions are not allowed. The mere arrangement or rearrangement or duplication of known devices, each functioning independently of one another in a known way. For example, umbrella with a fan or umbrella with a torch, uh, a bucket fitted with a torch, all this type of inventions are not granted. And a method of agriculture or horticulture, a method of producing improved soil with nematodes or vermiculture, this type of inventions are not patented. And method of treatment of animal, any process for the medical, surgical, curative, prophylactic, diagnostic, therapeutic, or other treatment of human beings, or any process for a similar treatment of animals to render them free of disease or to increase their economic value or that of their products. For example, a method of heart surgery. I mean, this is not a patentable inventions. Plant, animal, or their parts
Plants or animals in whole or any part thereof other than microorganisms, but including seed varieties and species, and essentially biological processes for production or propagation of plants and animals. For example, a tomato plant, crossing of the plants to make hybrid. And computer programs, as I said, it falls under copyright. So a mathematical or a business method or a computer program per se or algorithms, these are and examples are softwares. In India, it is not patentable. One can go for the copyright. Copyright and design matter. A literary or dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic creation whatsoever, including cinematographic works and television productions. All these are eligible for copyright. A mere scheme, a rule, or a method of performing mental act or method of playing game, yeah, these are all are not patentable inventions. A a presentation of information, yeah, that is also not patentable invention. Any topographical or integrated circuits, yeah, this is also not patentable invention. And anything is falling under traditional knowledge, an invention which in effect is traditional knowledge or which is an aggregation or duplication of known properties or traditionally known component or components. For example, turmeric powder in wound healing. Though in US they have filed the application and in fact they have granted, but later on they have withdrawn. Means this application got abandoned or rejected. Neem oil formulation as pesticide, insecticide. Even in Europe they have filed the application. And any invention which is falling under atomic energy, according to the section 4 of the Patent Act 1970, these are all not patentable inventions. No patent shall be granted in respect of an invention relating to atomic energy falling within subsection 1 of the section 20 of the Atomic Energy Act 1962. Okay. If you have any questions, I'm happy to answer, or I will continue with the procedural part of the patent filing. Shall I continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In case if you have any doubts or anything, you can stop me. Basically, it should be like a interactive. Then only you can understand. Okay. Okay. Now I'm talking about what are the procedures. What are the forms required and who can file the patent. All those procedural things I'm going to tell now. Okay. First thing is that form 1. This is application form. Form 2, it is for the invention disclosure purpose. It may be for the provisional or complete specification. Form 3, statement of foreign filing. In case if you have filed in any foreign country, that details you have to inform to the patent office in the form 3. And then request for examination, that is in form 18. Along with the a prescribed fee, you have to file. Then only they will examine. Otherwise, your application will not be taken for examination. Yeah, this is the form 1. You see here, basically, you have to provide the details of the applicant, inventor, title of the invention, address for correspondence, and declaration by the inventor. Here, true inventors, they have to sign on this document. Yeah, this forms looks like this. Yeah, this is the form 2. Here it starts with the it may be provisional or complete specification. Title of the invention you have to mention, and applicants and their nationality and address, and then a preamble to the description. For example, if your application is provisional, then you have to mention the preamble that the following specification describes the invention. If your application is complete, then
you have to write the preamble as the following specification particularly describes the invention and the manner in which it is to be performed. Then comes your description. Here, your description, you have to give. It may be a background of the invention and what was the problem and what are the current available methods available and what is your approach, what is your invention is better than the existing one. All those details you have to write in the description. So, and then claims is the art of the invention. If you are whatever you are claiming, it should be mentioned in the claims. If you are only mentioning in the description, means that is not covered. Date and signature you have to mention, and finally abstract of the invention. A patent specification. There are two types of specification. One is provisional specification and another one is complete specification. A provisional means, suppose if you have got an idea and you want to perform experiments, but still it takes time, another couple of months, but you don't have to wait for that. You can directly go and protect your idea. Before someone files a similar application, uh, prior to that, you have to file and protect your priority date. That's why people do this way. They file the application, a provisional specification, and within 12 months they complete their experiments and they will come up with the data. Then they will submit the complete specification. What is provisional specification? It should describe the nature of invention and contain the description of essential features of the invention. No need to include claims. As because you don't have the data and you don't have exact things, that's why you don't have to write the claims at that moment. However, after completing along with the complete specification, you can mention the claims. A complete specification, what are the headings it should have? Firstly, it should be title of the invention, then field of the invention, and then a background of the invention. Means so for whatever the available technology, available information, or you can say search report or prior art, all those details you have to mention in the background of the invention. Then what are the advantages or uses of the invention? Means how your invention is advantageous than the existing one. And then you have to write objective of the invention, then statement of the invention, detailed description with drawings, examples if any. You have to write all these headings. Then comes the claims. Claims, you have to define to cover the unity of the invention. And then finally, there will be a separate page for abstract. A complete specification. Fully and particularly describe the invention. It discloses the best method. If you are using any biological material, according to the Budapest Treaty, you have to deposit the microorganism in National Biodepository and disclose the source and geographical origin. In case if you are using any plant or organism from India, you have to obtain a permission from National Biodiversity Authorities. And end with one or more claims. You may be having one or more claims. And what is the fee applicable for filing a patent? For natural person and startup, one application filing fee is 1600 rupees, and small entity, now they have made only two categories. One is natural person and another one is other than the natural person or industry. So 1600 is the application fee for the natural person, and other than the natural person, that is 5 times more, it comes to 8000 rupees. In case if you are filing a physical filing, means if you are sending hard copy and demand drafts, etc., you have to add 10% additional. And expedited examination.
now in India, in September 2021, there is a provision for startup and even for women applicants. They can go for a expedited examination by filing Form 18A. For early publication, you have to file Form 9 along with the prescribed fee. Then within a month, you will receive the first examination report. If no objections after 6 months of publication, it will be granted. You can say within a year, within 8 months or within a year, you will get the patent grant if you are going in expedited examination procedure. Yeah, now comes the who can file the patent, either alone or jointly, by any person claiming to be true and first inventor, by any person being the assignee or person claiming to be true and first inventor, by the legal representative of any deceased person who can immediately before his death is entitled to make such application. And where are the offices? In India, we have 4 offices. One is in Mumbai, Chennai, New Delhi, and Kolkata. And which are the states falls under Mumbai? These are Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli. These states have to file or opt Mumbai office. And for Chennai office, all southern states, for example, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Pondicherry, Lakshadweep, Andaman Nicobar Islands, all these they have to file in Chennai office. All northern states, for example, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, and Uttar Pradesh. These states will have to choose a New Delhi office. Remaining states, the rest of India will file Kolkata as okay. Now, patent application processing. First, you will file the application, then it will be published. If you are going for early publication, within a month, your application will be published. In the normal route, after 18 months, they will publish. Then, if there are any pre-grant oppositions, if any one want to oppose your invention, they can do by filing a pre-grant opposition. If there are no opposition, means examiner will wait for 6 months. If they found that there is no opposition, they will examine the application, and if necessary, they will keep a hearing also. Means after submission of the first examination reply, if they are not convinced, then they will fix a hearing. After the successful hearing, they will grant or refuse the application. So then after the patent grant, if still any interested party, if they want to oppose within a year, they have to do the post grant opposition. As I said, in the normal route, publication will take place after 18 months, and 6 months is your opposition period, pre-grant opposition, and then examination and the grant. In case of expedited, only within a month your application will be published, and then 6 months is pre-grant opposition, and after that within a month they will either issue the grant or refuse the patent. So within a 8 months period you can get the patent in case of expedited. And another thing is that whatever I talked about, that is a national patent. Now I'm talking about international, that is patent cooperation treaty. What are the advantages of PCT? Seeking protection simultaneously. Suppose if you are filing in many countries, it's not possible for a person to file on the same day to protect the priority date. That's why what they have made is, if you are filing in patent cooperation treaty, almost 153 countries will be will have the same priority date, and a more decision time to enter national phase. So you will have almost 30 or 31 months time to enter into the national phase. For example,
if you are filing a PCT application and you want to go for at least 4 or 5 countries, then they will issue a international search report. Based on that, you can decide whether where my invention stands, whether it is really worthy to go for the national phase in so many countries or not. Like that, you can decide. It saves your lot of money. Strength of the invention through the search and examination report. As I said, they will issue the ISR, International Search Report. Based upon that, we applicant can decide. Opportunity to have foreign counterparts. Basically, International Bureau, they publish this invention in the international journal. So um, the persons from other countries also may like to collaborate or tie up with you, or for a, they may go for the licensing with you in and they can file in their countries with your consent. So all this type of things will be possible from this publication. What are the advantages of PCT? Filing a single application, international application with a single patent office, that is a receiving office, in one language, having effect in each contracting state. One formal examination by the receiving office, and one search, international searching authority, and one international publication. As I said, International Bureau of World Intellectual Property Organization, they publish your application. One optional preliminary examination, International Preliminary Examination Authority, they will conduct a examination. It's optional. Applicant has to pay the fee, then only they will examine and give their report. Then what to do means, if you have a patent, you can share the benefit of patent system, utilize the resources through organized research and development activities. You can capture the global market judiciously, earn profit through protected market. And I know that there are many students in the audience. So what are the opportunities or career prospects in patent or in the IPR field? I've just for the patent office examiner of patents and designs, one can apply. I mean, they call for the patent examiner positions. It requires mainly MSc in various subjects or equivalent, or BE or BTech in various subjects or equivalent. They conduct examinations through direct recruitment. One can apply and they can become patent examiners. And apart from that, if students or even faculties, if they are interested, they can try for patent agents also. What are the requirements? A person should be a citizen of India, and at least he or she completes 21 years of age, and degree in science and or engineering or technology, and additionally pass the prescribed examination. They conduct patent agent examination in India. One has to appear for that and qualify, then only they can become patent agents. And also people can join IPAB or courts for revocation proceedings, infringement suit, other legal proceedings. And for more details, you may log into ipindia.nic.in or wipo.int, epo.org, uspto.gov. These are the some of the sites you can log in and see more details. This is my last slide. It is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the one most responsive to change. This is from the quote from Charles Darwin. I thank you all for giving an opportunity and sharing the talk with all of you. And this is my email ID and this is my mobile number. If you have any doubt, or if you want to file a patent, you can approach my team or me. We will help you. And we have filed various application in India and abroad. So I'm happy to take questions if you have. Thank you, sir. Thank you for this knowledgeable session.
So the session is open for discussion. Students, if you have any questions, you can ask. Sir, I would like Okay. to ask one question. Yes. Hello, sir. If not now, even if you find any during your day-to-day life, if you find any doubts or anything, you can drop me a mail. Hello, I am audible, sir. Yes, yes. Sir, after complete specification, Ah, uh, we need to file for examination, right? correct. Then, if it is not filed within due date, Ah, examination, if is not filed, examination. ah. So, what would be the consequences, sir? So, You can see, you sir, help? actually, they will allow 48 months according to the Patent Act. Within that period, you have to file the request for examination. Otherwise, your application will not be filed and it will be abandoned. It will be aborted. Abandoned. Okay. Then we don't. We cannot again refile it. No, The the same thing is patent. that already your application will be published. Your own invention will kill the novelty. Okay. If you have improved version or any changes, then again you can file. But if the same application cannot be filed because already it will be in the public domain. Okay. Thank you, sir. Thank In case if your application is not published, if you withdraw, then you can go for the again filing. you. Okay. Okay. It has already been published, sir. So that's why asking Oh, if no, no. we. After publication, same invention cannot be filed. However, if you have improved a little bit or if there is any synergistic effect or anything, after Aha. judging your invention, one can advise whether to go for refiling or filing a fresh application. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Any other questions from students? Sir, once we do the filing offline mode, can we further continue with online mode, or we need to continue with offline only? Um, yeah, you can do this one. I mean, at any moment you can hybrid mode also. It's possible. First, I mean, let's say if you have filed initially offline, Yes, then sir. for example, FER or any subsequent proceedings, if you want to go with e-filing, that is possible. Mhm. Okay. Okay. Thank you. I mean, as you know, for offline mode, fee is also more and it takes more time. That's why nowadays people go for e-filing. Yeah, yeah. Yes, right, sir. Thank you, sir. So, has explained before going for vote of thanks, I'll give a preview of this lecture that this session is it is really very much knowledgeable, and sir has covered all the points related to IPR and patent in very easy language, so it will be a more easy. Before this session we thought that IPR and patent are so difficult and to get learn by students and also by so thank you very much for this session. Sir has explained which are the categories which are covered under the IPR. Sir give a detailed knowledge about the patent in which patentable and non-patentable areas, how we will go for the form filling procedure, which are the forms we have to complete and presentation of which are the types of patent again, and who can fill the patent, where are the patent offices where we can approach for the patenting. Those all things sir has covered in a very well manner, and also the timeline and
patent application processing, which is very much important to know, that also covered in this whole session. And one more thing, that is the job opportunities in the patenting and IPR, that is also given, or that idea is also given by the sir. So thank you very much, sir, for giving this detailed knowledge about the patent and the job perspective in the patent field also. So thank you very much, sir. So we will come for the last segment of this session, that is a vote of thanks. So I request Ms. Mrunal Chakre ma'am, Assistant Professor from the Department of Biotechnology, to give a vote of thanks. Ms. Mrunal Chakre ma'am. Thank you, madam. Good evening, everyone. I am glad to present the vote of thanks of today's session. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude to today's guest of honor, Mr. Sharan Basava sir. Thank you so much, sir, for spending your valuable time and for guiding us on the role of patent in supporting research and innovation. It really was a very informative seminar. In true sense, I am pretty sure that the knowledge that you gave us today will definitely help the students in their future. So on the behalf of Walchand College of Arts and Science, Autonomous College Solapur, I once again extend my heartfelt gratitude to Mr. Sharan Basava sir for making today's seminar a great success. I also would like to thank the president of today's session, principal of our college, Dr. S.V. Koti sir, for permitting us to organize today's guest lecture. I also extend my vote of thanks to Dr. R.V. Hippargi sir, Vice Principal Science Section, Dr. M.P. Joshi sir, Vice Principal Arts Section, and Dr. K.R. Rao sir, Coordinator WCBT, for their guidance and encouragement for this online session. I owe a special thanks to the teaching and non-teaching staff who are directly or indirectly involved in this program to make it successful. My heartfelt thanks to all the students for actively participating in today's session. I am sure the session would have enlightened you regarding the research and innovation ideas. Once again, I heartily thank to the resource person of today's session, that is Dr. Rahul Sherke sir and Mr. Sharan Basava sir, for accepting our invitation, for being present here, and for making this session a memorable success. Thank you all for your attention. All the students are having an important instruction. All the students are informed to fill the feedback form and e-assessment form. It is compulsory to fill these forms. After only filling these forms, you will get your e-certificate. Once again, I thank each of you for your attention. Now, with the permission of dignitaries, I declare that today's session is over. All the participants are requested to leave the meeting. Thank you so much.